So guys, I have pinged you the link to some learning material on the Marticus site. So guys, please try to access this link and let me know if you are able to access it. This is where you can read about Apache Spark. Don't read Scala because that's not our purpose. And meanwhile, I'm just starting the cluster, the Hadoop cluster or the Spark cluster on the cloud, AWS cloud. So before we get started, like we are waiting for more people to join in. Anyone having any question? You practice something and that didn't work. So guys, anyone any question on big data, whether it's Hadoop or Spark? Just for your knowledge, those of you who are just looking here on my screen, I was creating a Hadoop cluster or a Spark cluster on the cloud, but it failed, okay? It failed with certain errors. The error says that there are some security groups set up in my machines. Ingress means inbound, okay? Matlab, who can come in the server, like who can access the server. It's like inbound rule. So it's saying that you have certain inbound rules which allow public access. मतलब मेरे सर्वर को कोई भी एक्सेस कर सकता है, anyone, which is not a good idea. और ये मैंने ही किया था. ये यहाँ पे SSH रूल्स हैं जो पुट्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं ना हम इसको, तो उसके लिए मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे सेटअप किए थे, ड्यू टू विच दिस प्रॉब्लम एक्चुअली केम इन. तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और मैं फिर से वो क्लस्टर बनाऊंगा, वो बन जाएगा. मतलब जब भी आप क्लाउड पे कोई सर्वर बनाते हो तो वो ये चेक करता है कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है. अगर उसे सिक्योरिटी इश्यूज मिलते हैं तो वो आपको क्लस्टर बनाने नहीं देता. इसीलिए ये फेल हो गया. मैं इसको दोबारा से क्लोन कर लेता हूँ.
I'm recreating this. So I'm recreating the cluster on a cloud. It can be any cloud. तो अब क्या हो रहा है कि जो मैं सर्वर फिर से बना रहा हूँ क्लाउड पे, इट विल अगेन चेक फॉर दो सिक्योरिटी थिंग्स. अभी मैंने वो सही कर दिया है. मैंने वो एंट्रीज हटा दी हैं. एक तरह से फायरवॉल चेंजेस किए हैं मैंने कि कोई भी मेरे सिस्टम में बाहर से एक्सेस ना कर पाए. एक बार जब ये सर्वर बन जाएगा तो मैं वापस से वो फायरवॉल चेंजेस कर दूंगा कि पुट्टी वगैरह के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकूं. ओके. तो दिस वाज जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग. ओके, सो आई वाज आस्किंग क्वेश्चन. हाँ गुलजार, बताइए. व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट मैपर रिड्यूसर? सर एक्चुअली क्या आपने किसी क्लास जब क्यूब की क्वेरीज में जहाँ पे होता है 12 देयर आर ओनली मैपर्स नो रिड्यूसर्स, ऐसा कहीं होता है स्कूप में कहीं? हाँ बिल्कुल होता है. स्कूप में तो मैंने आपको बताया था ना कि स्कूप में तो रिड्यूसर कभी चलते ही नहीं है. देखो, ये अगर आपका कोई डेटाबेस है जहां से आपको डेटा इधर हडूप में लेके आना है, यहाँ से स्कूप के थ्रू आप डेटा लाते हो, राइट? तो स्कूप यस सर. एक्चुअली व्हाट स्कूप डू, स्कूप क्रिएट कनेक्शंस. स्कूप क्रिएट कनेक्शंस टू द सोर्स डेटाबेस. ठीक है. ठीक है सर. And for each connection that it makes, it runs a mapper. So there is only mapper which is used to bring data from a database. Okay. ठीक है. तो स्कूप में कभी भी रिड्यूसर नहीं चलते, सिर्फ और सिर्फ मैपर चलते हैं. कितने मैपर चलेंगे? जितनी आप कनेक्शंस बनाओगे पैरेलली. और हर मैपर अपना अपना डेटा लाएगा. मान लो एक टेबल है जिसके अंदर 4 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं. तो पहला मैपर 1 मिलियन लाएगा, दूसरा अगले 1 मिलियन लाएगा, तीसरा अगला 1 मिलियन लाएगा, चौथा अगले 1 मिलियन लाएगा. बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में हर एक जो मैपर है वो उस टेबल का इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा रीड करेगा. बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में दैट अगर एक टेबल है तो उसका कुछ डेटा एक मैपर प्रोसेस करेगा, कुछ दूसरा, कुछ अगला, ऐसा. और फाइनली वो सारा डेटा आपको HDFS पे एक फोल्डर की फॉर्म में मिलेगा. लेकिन इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स होंगी, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं स्कूप यूज करके डेटा ला रहा हूं एक डेटाबेस से और मैंने 4 मैपर चलाए हैं, तो हडूप में जो फोल्डर होगा उस टेबल के नाम का जिसको आपने इंपोर्ट किया, उसके अंदर कितनी फाइल्स होंगी? टोटल फाइल्स कितनी होंगी? यस अदिति, करेक्ट. गाइस, कितनी फाइल्स आएंगी अगर स्कूप यूज करके मैं एक डेटाबेस से डेटा ला रहा हूं हडूप में? नंबर ऑफ मैपर्स इज 4. हाउ मेनी फाइल्स विल बी देयर इन हडूप or HDFS? Nishta, I'm not asking about size of the files. I'm asking the number of files. Guys, आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है. Yes, Nitika, it's correct. We have been talking it multiple times कि अगर कोई मैप रिड्यूस जॉब चल रही है आपकी, ओके, अब मान लो उसमें कोई रिड्यूसर है ही नहीं, सिर्फ मैपर्स हैं. तो अगर आपके 10 मैपर चल रहे हैं तो अल्टीमेटली हर मैपर अपनी अपनी फाइल बनाएगा. टोटल 10 फाइल बनेंगी. ओके. तो अगर स्कूप में 4 आपके मैपर चल रहे हैं तो आपकी 4 फाइल्स बनेंगी. हडूप में 4 फाइल्स बनेंगी.
लेकिन अब वो फाइल ब्लॉक्स में स्प्लिट होगी, हर एक फाइल, और HDFS पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो एक अलग बात है। बट सबसे पहले आपको कितनी फाइल्स दिखेंगी यहाँ पे, जिनको हम पार्ट फाइल्स कहते हैं, हमने देखी भी थी, जिनके नाम में M_0000000 ऐसे ही करके लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, 000 इस तरह से फाइल्स के नाम थे। आई डोंट नो कि आप लोग हैंड्स ऑन कर रहे हो या नहीं। तो रिमेंबर दैट the number of files getting created in Hadoop is equal to the number of mappers, अगर सिर्फ मैपर वाली जॉब है। लेकिन अगर ऐसी जॉब है जिसमें मैपर्स और रिड्यूसर्स दोनों चल रहे हैं, तो द नंबर ऑफ आउटपुट फाइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिड्यूसर्स, not number of mappers, because mappers pass their data to reducer and then reducers ultimately dump the data in Hadoop. Okay, any question on this? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर पर स्क्यूब में मैप रिड्यूस जॉब्स तो चलती है ना? स्कोप में मैप रिड्यूस जॉब चलती है, बट उस मैप रिड्यूस जॉब में रिड्यूसर कभी नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ मैपर चलता है। पर यही मेन डाउट था कि बिना रिड्यूसर के मैप रिड्यूस जॉब कैसे चल सकती है, यही क्लियर नहीं हो रहा है ये कई दिन से स्टडी के बाद भी। ओके ओके ओके, 1 सेकेंड। एक सेकेंड ना, मैं एक सेटिंग चेंज कर रहा हूँ इसमें, 1 मिनट दो मुझे। हाँ गुलजार, अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। Gulzar, can you tell me what is the difference between mapper and reducer? Gulzar, any Yes, idea? sir. Yes, or difference between mapper and reducer? सर सिर्फ सर नॉट येट क्लियर। Guys, anyone? Difference between mapper and reducer? You can speak up, you can type in. Difference between a mapper and a reducer. I'm waiting if someone is typing, or else you just ping me that you don't know. Right, right, Vipul, correct. इसको हम थोड़ा और सही कर सकते हैं, बिकॉज रिड्यूसर में भी की वैल्यू पेयर्स होते हैं विपुल। मैपर रिड्यूसर दोनों की वैल्यू पेयर पे ही काम करते हैं, बट यस रिड्यूसर डू एडिशनल थिंग विच इज एग्रीगेशन। मतलब आप खुद सोचो कि अगर रिड्यूसर की वैल्यू पेयर नहीं रखेगा तो फिर वो कैसे एग्रीगेशन करेगा, क्योंकि की इज लाइक ग्रुप बाय।
जिस पे उसे ग्रुप करना है, राइट? तो रिड्यूसर को भी की वैल्यू पेयर चाहिए ही चाहिए. Okay. Consider that this is a file. Consider this is a file in Hadoop. Okay. You want to read it. You want to just read it and create a clone of it. Clone means one more file. Understand it, okay? Hadoop में एक फाइल पड़ी है, आपको उस फाइल का एज एस क्लोन बनाना है. तो you will run a MapReduce job which will simply clone this and create as is copy. इस केस में आपको क्या लगता है, मैपर्स चलेंगे या मैपर रिड्यूसर दोनों चलेंगे? Guys, these are certain analytical things. Hadoop में एक फाइल है, मुझे एज इज उसका कॉपी बनाना है. वेरी गुड, वेरी गुड. The another requirement is, you are right Nitika and Vipul. Another requirement is, इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है मुझे उस डेटा में ग्रुपिंग करनी है. मान लो ये मेरे पास कुछ कंट्रीज का डेटा है, हर कंट्री के मतलब मेरे पास क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस हैं, तो हर कंट्री के मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और मुझे कंट्री लेवल पे ग्रुप बाय करके एक कंट्री का सिर्फ एक रिकॉर्ड चाहिए कि उसकी टोटल जीडीपी कितनी रही या एवरेज जीडीपी कितनी रही पिछले कुछ सालों में, उसका कंट्री की एवरेज जीडीपी कितनी रही, इंडिया की एवरेज जीडीपी, अमेरिका की, जर्मनी की. नाउ व्हाट डू यू थिंक इन दिस केस, मैपर चलेगा, रिड्यूसर चलेगा या दोनों चलेंगे, क्या होगा? ओके, वेरी गुड. सो लेट मी एक्सप्लेन यू. देखो भाई होता क्या है, whenever you have a file and you want to read that file, mappers come into picture. Mapper क्या है कि भाई मान लो आपको अपना घर शिफ्ट करना है, ठीक है, आपको अपना घर शिफ्ट करना है और बहुत सारा सामान है आपके घर में, तो आपने 4 लेबर बुलाए और उन्हें बोला भैया सामान उठा उठा के यहां से वहां पे लेके जाओ. तो व्हाट दे विल डू, दे विल रन लाइक मैपर्स कि भैया जाएंगे. आपने एक को बोल दिया भाई तू रूम ए का सामान उठा के लेके जा, मान लो 4 कमरे हैं आपके पास, सबको एक एक कमरे में भेज दिया. सो दैट इज अ मैप ओनली जॉब. ठीक है, इतना समझ आता है? तो वो आपका एक घर से दूसरे घर में सामान भेज देंगे. बट अब थोड़ा इसको हम ऐसा समझते हैं, ये 4 कमरे हैं, फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड रूम, फोर्थ रूम, 4 कमरे. पहला तो केस ये था कि ये आपका नया घर है, पहला रूम, दूसरा रूम, तीसरा रूम और मान लो ये चौथा रूम, ये 4 रूम है. ऐसे 4 मैपर चले. पहले ने बोला मेरी जिम्मेदारी है इस कमरे से इस कमरे तक डेटा पहुंचाना, जैसा घर सामान फर्नीचर पहुंचाना. दूसरा कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, तीसरा कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, चौथा कहता है मेरी जिम्मेदारी है. 4 मैपर चले और चारों ने अल्टीमेटली अपना अपना काम किया, मतलब 4 आउटपुट फाइल्स बन गई आपकी. वेरी गुड. बट इसमें हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जो सामान ट्रांसफर किया जा रहा है एक कमरे से दूसरे कमरे में, व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट सामान, दैट गुड्स, फर्नीचर्स, व्हाटएवर. तो मैपर इज जस्ट एक ब्लाइंडली काम कर रहा है बिना दिमाग लगाए. डेटा उठाया फेंका, उठाया फेंका. लेकिन अब तुमने बीच में रिड्यूसर बिठा दिया. एक रिड्यूसर, let me clean it, let me draw it again. This is first room, second room, third room, fourth room. इसको समझ लेना बड़े ध्यान से गाइस. अभी तक तो 1-to-1 मैपिंग हो रही थी, राइट? मैपर्स वर लाइक मैपिंग द डेटा 1-to-1, इधर से उठाओ उधर डालो. अब तुमने बीच में 2 रिड्यूसर बिठा दिए, एक रिड्यूसर यहां बैठा दिया, एक रिड्यूसर यहां बैठा दिया. अब रिड्यूसर क्या है, मान लो द फर्नीचर दैट यू हैड इन योर हाउस वाज ऑफ 2 टाइप्स. लेट मेक इट सिंपल, इटालियन फर्नीचर एंड इंडियन फर्नीचर. लेट्स मेक इट, हर एक फर्नीचर पे कुछ टैग लगा है जिसको देख के हमें पता लग जाता है कि वो इटालियन फर्नीचर है या इंडियन फर्नीचर है.
तो यहाँ मैंने रिड्यूसर R1 बैठा दिया और यहाँ रिड्यूसर R2 बैठा दिया. Okay, so that the Indian furniture goes in these two rooms or whatever, and Italian furniture goes somewhere else, wherever, whichever way you want. But now mappers, what they will do, mappers will send in their data into a shuffle sort phase. They will not directly dump the data, they will dump their data here. All the mappers will put their data here. Now all the mappers will dump their data here. मतलब वो सारे के सारे अपना डेटा लाएंगे और एक जगह पे आके इकट्ठा करेंगे. ठीक है, और यहां से वो टैग देखेंगे कि जो फर्नीचर वो लाए उस पर टैग लगा हुआ है की वैल्यू की इंडिया और इटली. तो उन्हें पता है कि भैया अगर इंडिया है तो आप इस रिड्यूसर को दे दो. ठीक है, लेकिन अगर आप जो फर्नीचर लाए हो इटली का है तो वो इसको दे दो. सिमिलरली ये क्या करेगा, इस रूम में फर्नीचर इंडिया का भी होगा इटली का भी होगा. इंडिया वाला इसको देते रहेगा, इटली वाला इसको देता रहेगा. फिर से ये वाला भी बंदा इस रूम से जो फर्नीचर लाएगा वो इंडिया का इटली का दोनों का होगा. इंडिया वाला वो इसको देगा, ये रिड्यूसर कहता है मैं इंडिया का हैंडल करूंगा, इटली वाला इसको देगा. ठीक है, अब रिड्यूसर की जिम्मेदारी है कि जो इंडिया वाला फर्नीचर है वो एक जगह पे जाके कहीं पे भी डाल दे as a single file, because I told you one reducer means one output file. So this reducer will have its own data. ठीक है, similarly this reducer will generate only one single file which contains all the Italian data or the Italian furniture. तो अल्टीमेटली ये जो रिड्यूसर है मान लो इट्स लाइक अ ट्रक विच इज टेकिंग द डेटा ओनली फॉर इंडियन फर्नीचर टू योर न्यू हाउस. अब आपके ऊपर है कि आपको न्यू हाउस में वो डेटा कहाँ रखना है, कैसे रखना है. हमने आपको सेग्रीगेट करके दे दिया, सेग्रीगेशन हो गई. रिड्यूसर डू सेग्रीगेशन, सेपरेशन ऑफ द डेटा. ओके, so that's what the reducers did. So mappers, they went through a shuffle sort phase. ये डेटा इस रिड्यूसर को जाना है, ये इसको जाना है, बिकॉज मेरे पास दो तरह का फर्नीचर है. अब कल को 10 तरह का फर्नीचर होता तो आप 10 रिड्यूसर चला सकते थे. ठीक है, so ultimately reducers are doing now what? They are taking the data which belongs to a particular key, okay, and then further generating the output from that. Okay, so that this file contains the data only for one single key. This file contains the data for one single key. There is no mixing of the data. Guys, getting this? So reducers takes the data for a particular key and generate an output file for it. And now it's on to you. What do you want in this reducer? You want to run an aggregate logic that jitna bhi furniture generate hua, tell me the count of Italian furniture, count of Indian furniture. You can do that aggregation. Okay, it depends. जो भी की के साथ जो वैल्यू आ रही है, की के साथ जो वैल्यू आ रही है, की तो हो गई इंडियन फर्नीचर और वैल्यू आ रही है, वैल्यू पे हम एग्रीगेशन करते हैं. ओके, मान लो कि हर एक जो फर्नीचर है उसके साथ टैग लगाए कि वो इंडियन है कि नहीं और एक वैल्यू है उसकी कि कितने प्राइस का है. तो you ultimately want to tell me the total price of the Indian furniture and the total price of the Italian furniture. So that logic will be written inside the reducer. Gulzar, we are not going into anything which is not making logic here. Okay. So guys, you are getting it.
Any question? Gulzar, did you get it? Your question is irrelevant, okay? That question is irrelevant, so I'm not taking that. Okay, so what I'm saying is that whether it's an Indian furniture or Italian furniture, now don't go into that, okay, company is Indian and furniture is Italian. That's not making sense here. So some furnitures are Italian, some are Indian, and finally that is being denoted by the key. And with each furniture you have a value, which is the price. And ultimately I want to know the total price of the Italian furniture and the total price of the Indian furniture, or the total quantity of the Indian furniture and total quantity of the Italian furniture. So that's reducer will help me to do. But mappers are like laborers. They will just take the data and move it, take the data and move it. But reducers are like some supervisors, some managers who are talking to these laborers that अरे रुको, ऐसे blindly data move नहीं करना है, हमारे client ने नहीं बोला है. हमारा client जो है वो कहता है कि भाई उसको segregate करना है, इंडियन फर्नीचर अलग, इटालियन अलग, और उसे ये भी हमसे पूछा है कि उसके टोटल इंडियन फर्नीचर की क्वांटिटी एंड प्राइस कितना है और इटालियन फर्नीचर की क्वांटिटी एंड प्राइस कितना है. तो अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरह की होगी तो रिड्यूसर्स बीच में आएंगे. So reducers will be like managers who will manage the labors. Mappers are like laborers. They'll just work blindly just to move data from one place to another. Okay, but both of them have a key value pair. Okay, Vipul, you got it. Key value pair तो mandatory है, चाहे वो mapper हो चाहे वो reducer हो. Rather reducer को तो key value pair ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उस पे उसको एग्रीगेशन करना है, की पे एग्रीगेट करके उसको वैल्यू का सम मिन मैक्स काउंट निकालना है. विपुल, गेटिंग इट? ओके ओके ओके. निष्ठा इज सेइंग सो एक्चुअल लॉजिक एनालिसिस इज डन बाय रिड्यूसर. So yeah, Nishtha, means yes, you can say that logical analysis as in yeah, data analyst जो mainly काम चाहता है वो reducer के बिना नहीं हो सकता. As a data analyst you cannot work without a reducer. But if you are just interested in moving data from say one table to another table as is, then mappers is good enough. But yes, Nishtha, it's mandatory for an analyst to write queries which runs reducer. या इसको मैं ऐसा कहता हूं कि डेटा एनालिस्ट जो क्वेरी लिखते हैं मोस्टली वो क्वेरीज ऐसी होती हैं जो रिड्यूसर चलाती हैं, बिकॉज उसमें वो कुछ एग्रीगेशन, कुछ जॉइंस, ग्रुप्स कर रहा ही होगा. Gulzar says so reducer gives instructions and mapper just follows the instructions. No, Gulzar, not that. That's not the case, because see, mappers comes first in the picture, reducers comes later. So how can reducers give instructions to something which is coming in before that? Getting it, Gulzar? Mappers happen first, then reducers. So how can reducers tell mappers what to do? That's not the case. It's you as a developer, it's you who is the developer who actually decides what to do. So ultimately mappers just feed in their data to reducers. Reducer नहीं बताते mapper को क्या करना है. Mappers feed in their data to reducers. One second, let me put the battery. गुलजार, यू आर गेटिंग दिस? माई मीन्स reducers को तो मैपर से डेटा मिलता है. Reducers cannot tell mappers what to do. Reducers already know what they need to do. Mappers simply transfer data to reducers. Reducers को पहले से पता है हमें क्या करना है. ऐसा नहीं कि मैपर उसको बता रहा है, मैपर उसको बस वो डेटा भेज रहा है.
उस लॉजिक को चलाने के लिए. So reducers don't even check the task done by the mappers. Reducers just receive the data from the mappers. That's it. They just receive the data from the mappers. That's it. या निष्ठा करेक्ट. मतलब रिड्यूसर्स को इससे मतलब नहीं है मैपर के अंदर क्या हो रहा है. रिड्यूसर्स को इससे मतलब है कि उसे जो काम करना है उसके लिए उसे जो की वैल्यू पेयर चाहिए वो उसे मिल रहे हैं या नहीं. अब अगर मैपर ने ही गड़बड़ कर दी तो रिड्यूसर बेचारा कुछ काम नहीं करेगा. वो या तो एरर मार देगा या फिर रॉन्ग एनालिसिस करके आपको दे देगा. ठीक है. I don't know what's happening today. Why it's not starting. One second. There is a security group which is having the issue. 7ED. Here is the one. Guys, you can start your machine. Okay, I got the issue. Actually, I fixed it. Let me clone it. So it will be done. So what happened was मेरे कुछ firewall settings में और भी entries रह गए थे. So I removed all those additional entries from my firewall. Let's see. So guys, you can start your machines. We will do the PySpark today. So you can, Nishta, I didn't get it. What is enter to PySpark? What is that? Yes. You have to type PySpark in the Linux. अच्छा, अभी ठीक है. हाँ, अभी जो एरर आया है वो अलग है. जब आप लोग क्लाउड पे काम करते हैं और क्लाउड पे सर्वर्स बनाते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के एरर्स आते हैं. मोस्टली फायरवॉल रिलेटेड एरर्स होते हैं. अब ये जो एरर है ये क्या है. मान लो कि मैं 4 नोड ले रहा हूं लेकिन हर एक नोड का साइज मैंने बोला कि मुझे कुछ पर्टिकुलर साइज के नोड्स चाहिए. अब ये कह रहा है कि भाई आपको बड़े मशीन्स खरीदने पड़ेंगे, ये छोटे वाले मशीन्स हम अलाउ ही नहीं करते. लेट मी शो यू. मैं अपनी कॉस्ट बचाने के लिए क्लाउड पे छोटे मशीन्स, सस्ते मशीन्स लेने की कोशिश कर रहा था. सस्ते का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सस्ते हैं. दे आर स्टिल वेरी कॉस्टली. बट आई वेंट to one level down in the configuration. तो M5 2x large gives me 8 cores with 32 GB RAM. तो ये मशीन मैं ट्राई कर रहा था बट वो अलाउ नहीं कर रहा. तो मुझे अल्टीमेटली इस मशीन की कॉस्टिंग पे करनी होगी जो 8x लार्ज होती है, 8 टाइम्स लार्ज, 32 कोर और 128 GB का रैम. ओके, तो अगर मैं इस मशीन को सिलेक्ट करूंगा इन दोनों प्लेसेस पे तो ये चल जाएगा. तो कई बार क्या होता है कि आप स्पार्क चलाना चाह रहे हो लेकिन स्पार्क इज नॉट अलाउइंग यू लेसर देन 32 कोर एंड 128 GB का रैम पर मशीन. तो यू हैव टू डू दैट.
तो अभी मैंने अपने मशीन्स बड़े कर दिए हैं. As soon as I increase their configurations, नहीं नहीं विपुल, ऐसा नहीं है, बल्कि क्लाउड का तो फायदा ही है कि इट कैन सेव यू लॉट ऑफ मनी प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज देम. क्लाउड एक्चुअली सेव मनी, बट वी शुड नो हाउ टू यूज देम प्रॉपरली. ठीक है, तो लेट्स सी, ये स्टार्ट हो जाएगा. तो हमें 2 एरर्स आई मशीन बनाते समय. एक आई फायरवॉल्स में, एक आई हमें फिर से एरर आ गया. लीव इट. एक आई हमें फायरवॉल्स सेटिंग में, और एक आई हमें मशीन के टाइप में. Okay guys, so it's starting. So let's go into the LMS side. So there were certain important points जो हमने अभी डिस्कस करने हैं. So let's start one by one. रिमेंबर, जब भी आप किसी भी कंपनी में जाते हो जो कहती है कि हम बिग डेटा में काम करते हैं, तो या तो हडूप में काम कर रही होगी या स्पार्क में काम कर रही होगी. हडूप से मेरा मतलब है मैप रिड्यूस, और या फिर स्पार्क. ठीक है, मैप रिड्यूस में प्रॉब्लम क्या थी, मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक मैपर है और रिड्यूसर है, तो मैपर का जो आउटपुट होता है वो डिस्क में राइट होता है, और रिड्यूसर डिस्क से रीड करता है. राइट, तो देयर इज अ डिस्क रीड एंड राइट विच हैपेंस अ लॉट. राइट, due to which the performance in MapReduce is slow. So can we avoid that disk read and write? So Spark is a general purpose processing engine that can be used instead of MapReduce. So we can replace MapReduce completely. Okay. There are companies like Netflix, eBay, Yahoo. They have 8,000 nodes cluster. They have 8,000 nodes cluster. यहाँ तो हम 3 nodes 10 nodes की बात करते हैं. They have 8,000 nodes. We saw that Spark is very fast as compared to MapReduce. Spark में 2 चीजें होती हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि Spark में everything is in memory. Spark also uses disk. Guys remember this. ऐसा नहीं है कि Spark में सारा काम मेमोरी में ही होता है. Spark also uses your disks. So the point is, if you do everything in memory, Spark is 100 times faster than MapReduce. But doing everything in memory is very costly. You may need like 200 GB, 400 GB RAM. So which is really very costly. तो कंपनियां ऐसा नहीं है कि सारा काम मेमोरी में ही करती हैं, कि स्पार्क की बात हुई तो सब मेमोरी में होगा. नहीं, वो भी डिस्क लेवरेज करते हैं. तो स्पार्क ऑपरेशंस आल्सो लेवरेजेस डिस्क्स. बट when you talk about memory, it's 100 times faster. When you talk about disk, it's 10 times faster than MapReduce. Still, it's faster than MapReduce. Spark का जो internal processing
आर्किटेक्चर है, that is still better even if you talk about disk. Yes, गुलजार, हार्ड डिस्क. दूसरी जो फायदा है, हमने देखा कि आप स्पार्क में जावा, स्काला, पाइथन कुछ भी कर सकते हो. स्काला की फुल फॉर्म होती है गाइस स्केलेबल. स्काला इज स्केलेबल. मतलब स्केलेबल मतलब क्या होता है कि आज मेरे पास एक मशीन है, कल मैं 4 मशीन और अगर जोड़ दूं मेरे क्लस्टर में, तो इजीली मेरा सिस्टम काम कर सके. स्केलेबिलिटी. तो स्काला एक स्केलेबिलिटी बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कितने भी आप क्लस्टर में मशीन जोड़ दो, इट विल वर्क बेटर. यू कैन डू ऑल द सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स. हमने पिछली क्लास में देखा था कि अगर मैं आपको कोई भी फाइल दूं, आप उस फाइल को सिंपली क्या करोगे, एक आरडीडी में कन्वर्ट कर दोगे या फिर सीधा उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दोगे, और उस डेटा फ्रेम के ऊपर क्या चलाते हो आप, डीएसएल, डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. लेकिन अगर आपको डीएसएल पसंद नहीं है तो आप डेटा फ्रेम को एक टेबल में कन्वर्ट करते हो और उस टेबल पे एसक्यूएल, स्पार्क एसक्यूएल चलाते हो. यही बस 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. फाइल को या तो आरडीडी में लोड करना, या आरडीडी से डेटा फ्रेम बनाना, या फिर डायरेक्टली ही डेटा फ्रेम बना लेना. डेटा फ्रेम के ऊपर डीएसएल चलाना. अगर डीएसएल पसंद नहीं है तो डेटा फ्रेम को टेबल में कन्वर्ट करना और टेबल पे स्पार्क सीक्वल चलाना. इस पूरे फ्लो में कोई डाउट है? बिकॉज यही है बस आपका ब्रेड एंड बटर इफ यू टॉक अबाउट स्पार्क. अगर आपको ये बस पता है, यू कैन डू एनीथिंग. We create RDDs and convert them into data frames. But I told you we should avoid that. Rather, directly create the data frames and then convert them into tables and run Spark SQL. You can even avoid DSLs. ये क्लियर है या इसमें कोई डाउट है हमने पिछली क्लास में जो किया था? गाइस, इस प्रोसेस में कोई डाउट है? इस प्रोसेस में, ये जो प्रोसेस हमने फॉलो की थी पिछली क्लास में, इट्स क्लियर? RDDs, data frames, registering them as the temp table. Okay, Tanya, thank you. Perfect. This disk wala thing, Gulzar, I'll explain. So Spark, देखो, MapReduce is slow, Spark is fast. We know why, because it leverages memory. But there are some other concepts also which we will see. Using Spark, you can do data analytics, interactive analytics. Okay, interactive analytics क्या होता है? कुछ नहीं है, बस आप स्पार्क, पाईस्पार्क शेल के अंदर जाके कोडिंग करते हो, जो उसको हम इंटरेक्टिव एनालिटिक्स कहते हैं. ये मतलब सिंपल सी चीज है. अगर आप हाइव शेल के अंदर कुछ क्वेरी लिख रहे हो तो वो इंटरेक्टिव एनालिटिक्स है. लेकिन अगर आप एक डॉट एचक्यूएल फाइल बना के उसको रन कर रहे हो तो वो इंटरेक्टिव एनालिटिक्स नहीं कहलाता. Let me show you. Okay, this time the machine is started. So what I will do, guys, I will go to putty. I'm going to putty in the term session. I'll put this. What's the day today? It's 4th Jan. So I'm just putting its name as 4th Jan. Save it. Open it. Unable to open this. Host does not exist. Okay, I think this machine is still starting. 1 second. Okay, it's still provisioning these machines. So I can wait for some more time.
it's just connecting to that machine. It may be starting at the back end. So guys, if you can see, right, these machines are being started at the cloud. मतलब क्लाउड में कहीं पे मशीन अभी प्रोक्योर की जा रही हैं, उन पे हडूप इंस्टॉल किया जा रहा है, और हडूप जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद ही मैं कनेक्ट कर पाऊंगा. उससे पहले मुझे मशीन का आईपी एड्रेस या होस्ट नेम तो मिल गया है, बट मैं मशीन पे कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि वो मशीन के ऊपर अभी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन चल रहा है. वो मुझे कैसे पता लग रहा है? अगर आप यहाँ देखें, हार्डवेयर दे आर प्रोविजनिंग, बूटस्ट्रैपिंग means they are getting started, right? So it's still running the installation. It's still running the installation on the machine. It normally takes just 5-6 minutes and then you get started with this. Let's wait for some more time. Okay. So you understood what is interactive analytics? मतलब आप एक क्वेरी लिखते हो, इमीडिएटली उसका आउटपुट आ जाता है. दूसरी क्वेरी लिखते हो, इमीडिएटली उसका आउटपुट आ जाता है. वो होता है इंटरैक्टिव. यू आर इंटरैक्टिंग विद द हाइव शेल और से पाइस्पार्क शेल. But when you run a program, you get the output once that program is complete. So that is not interactive analytics. That's a normal analytics. You run a program and you get the final output. मान लो एक प्रोग्राम के अंदर 10 SQL कमांड्स हैं, but you will see only the final output, not the output of each SQL, because that is not interactive. But if you run that multiple SQLs from a Hive shell, हर एक SQL का आउटपुट आपको वहां दिखता है, राइट? उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव एनालिटिक्स. You can do मतलब all the SQL analytics, you can do machine learning, and also you can do graph analytics, and you can do real-time analytics, stream processing. Okay. How is Spark actually fast? That's very important. So if you look here, you ran a MapReduce job, it took some time. You ran the same MapReduce job again, it took the same amount of time. Why? Because MapReduce does not cache anything. It does not put anything in, keep anything in cache. But now see Spark. You ran the job for the first time. It took some time, but still that time is lesser than MapReduce. Okay. But when you run it second time, the same job, it took even lesser time. Why? Because read this. Spark data is cached in memory after first iteration. मतलब अगर मैंने एक प्रोग्राम चलाया आज, हो सकता है कि वो 10 मिनट ले, लेकिन आज क्योंकि ये चला गया, चल चुका है पहली बार, तो इसका जो डेटा है वो मेमोरी में स्टोर कर लेता है स्पार्क. अब कल को जब मैं इसे चलाऊंगा, सेम प्रोग्राम को कल दोबारा अगर चलाऊंगा, तो it will be faster. It may take half time or even lesser because the data is already in memory, so it will refer that data from the memory. But यहाँ पर ये जरूर हो सकता है गाइस कि क्या जो डेटा मेमोरी में है वो ओल्ड तो नहीं हो गया है. मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कल से आज के बीच में कुछ नया डेटा जनरेट हो गया है, लेकिन वो तो मेमोरी में होगा ही नहीं. कैन एनीवन टेल मी? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? समझ रहे हो? स्पार्क ने ये तो करा, स्पार्क ने ये तो कर दिया कि भैया आज मैंने जो चलाया वो सारा डेटा मेमोरी में रख लिया. अब कल जब मैं दोबारा चलाऊंगा तो वो मेमोरी का ही तो डेटा रेफर करेगा. बट वट की कुछ नया डेटा मेरा और भी जनरेट हो चुका है, वो तो मेमोरी में होगा नहीं, तो मुझे रॉन्ग एनालिटिक्स मिलेगा स्पार्क से. So you're getting that? Anyone can think about it? How can that be resolved? Okay. Anyone else, guys? The question is,
I was running a job today, and that job, what it did, it cached the data, and now when I'm tomorrow running that same job, it is referring to the cached data. But the problem is कि cached data तो पुराना हो सकता है, एक दिन में कुछ नया डेटा भी तो ऐड हुआ होगा, वो तो कैशे में है नहीं, तो what should happen? Okay, let me tell you. Definitely, if you don't refresh the cache, or if you don't refresh that data, you still point to the old data set. So to solve this problem, we have to manually refresh the data which is in Spark. For example, when I am writing a program which is refreshing the data in Hadoop, I need to rebuild my cache. Okay, so whenever I am again writing more data into the HDFS or the storage environment, at that time I need to write one more code which will make sure that the cache is refreshed or rebuilt, so that tomorrow if someone is going to refer to the data which is in cache, he will get the latest data. So those who are writing the data can also rebuild or refresh the cache, or else what I can do is, if I am doing the analytics, even I can write the code which will refresh the cache with the latest data, but that will be थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा. समझ रहे हो? तो मतलब कभी भी मैं अपना एनालिटिक्स प्रोग्राम अगर चला रहा हूं, तो या तो मैं शुरू में खुद से ही कैशे को रीबिल्ड कर लूं, सो दैट कि लेटेस्ट डेटा हमेशा मेरे पास रहे. उसके बाद जितनी भी स्टेप्स हैं वो कैशे से रेफर करेंगी, हर स्टेप कैशे से रेफर करेंगी. बस पहली बार में मुझे कैशे रीबिल्ड करनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बट वो मुझे आगे आने वाली स्टेप्स में बहुत ज्यादा मदद करेगा. या फिर ये प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही मैं ये वाला पाथ लूं कि जब भी डेटा राइट हो रहा है मेरे सिस्टम में, मैं उसी समय कैशे को रीबिल्ड कर दूं, सो दैट कि इस स्टेप पे मुझे कैशे रीबिल्ड ना करनी पड़े. दैट्स ऑन टू अस, बट यस, व्हेन वी नो कि हमारे सिस्टम में नया डेटा आ सकता है, वी शुड रीबिल्ड द कैशे और रिफ्रेश द कैशे. ओके, बट नॉर्मली मान लो आपको एक एनालिटिक्स क्वेरी दिन में 100 बार चलानी है. अगर आपको एक क्वेरी दिन में 100 बार चलानी है, तो जो पहली, अगर एक क्वेरी को 100 बार चलाना है, तो पहली बार जब वो क्वेरी चलेगी तो वो सब कुछ कैशे में ले आएगी, तो बाकी जो 99 बार वो क्वेरी चलनी है, दे विल बी वेरी फास्ट. ठीक है, और हमें पता है कि मेरे सिस्टम में डेटा दिन में सिर्फ एक ही बार आता है. मेरे सिस्टम में डेटा दिन में सिर्फ एक ही बार आता है. उसके बाद 100 बार मेरी क्वेरी चलती है, तो पहली बार जो क्वेरी चलेगी वो डेटा मेमोरी में ले आएगी. उसके बाद बाकी 99 क्वेरीज उसी डेटा को रेफर करती रहेंगी, और फिर अगले दिन मुझे दोबारा से कैशे रिफ्रेश करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है. बट मुझे पता है कि दिन में वो क्वेरी अगर 100 बार चलनी है, तो पहली ही बार कैशे को रीबिल्ड करो, उसके बाद 99 जो क्वेरीज हैं, दे विल बी वेरी वेरी फास्ट. बट अगर आपको लगता है नहीं मेरा दिन में डेटा ही हर मिनट में रिफ्रेश हो रहा है, तब तो फिर स्पार्क के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब स्पार्क मे नॉट बी एबल टू लेवरेज द कैशे, क्योंकि आप ये 99 क्वेरीज कैसे लेवरेज करेंगी कैशे, जब कैशे बार बार रीबिल्ड करना पड़ रहा है. तो द केस वेयर यू नो दैट डेटा इज कमिंग वंस और ट्वाइस इन अ डे, and then you are running the query multiple times, then only it makes sense. Getting it, guys? So that's very important. ठीक है, तो एक तरह से बैच एनालिटिक्स जिसको हम कहते हैं, स्पार्क उसे बहुत फास्ट कर देता है. बैच एनालिटिक्स क्या होता है कि डेटा दिन में एक ही बार आता है, उसके बाद आप उस पर क्वेरिंग करते हो, चाहे कितने भी बार करो, लेकिन डेटा दिन में एक ही बार आएगा आपके पास.
तो बैच एनालिटिक्स के लिए तो इट इज वेरी वेरी गुड. जैसे MapReduce was only and only for batch analytics. So Spark can also do batch analytics 100 to 10 times faster. How? It caches the results. Yeah. So if you look here, what was happening in Hadoop? Move data through disks and networks. Means there is a client who wants to read some data. Okay. But दिन में वो 50 बार वो डेटा रीड करने चाहता है. Whenever he wants to read it, he will read it from the disk, which is not good. Here you see the client, same client, he wants to read the data. For the first time when he read from the disk, but after that everything comes in the caches. So these are like caches. So he will read everything from the caches. Okay. So user can cache the data in memory. So that's the biggest benefit of Spark. First time definitely you will read from disk, so it will be slow, but after that it will be very fast. Now, how Spark do that? So I told you this RDD, resilient distributed data sets. Okay, the cluster is started. Wait. Yeah. So now what happens, guys? I told you RDD multiple times, very important. Spark is based on the concepts of RDDs, resilient distributed data set. So data set means if you have a file, and I told you in Scala there are two ways, var and val. So RDD should be what? Var or val? Guys, if we talk about Spark and Scala, I told you, right? Scala. So there are two ways of creating a variable, var and val. So what was the difference between var and val? Vals are immutable. Very good. So if you see the word immutable here, right? Immutable. So whenever we talk about an RDD, RDD should be created using val, not using var. If you talk about Java or Scala. So val means it's immutable, means you cannot change its content. You cannot change its content. मतलब अगर एक RDD बन गई तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता. तो मान लो आपने फाइल रीड की, दैट कम्स इनसाइड एन RDD. अब इस फाइल के ऊपर आपने एक फिल्टर लगा दिया कि शो मी द डेटा विच इज फॉर से कंट्रीज इक्वल टू इंडिया. तो यू विल गेट अ फिल्टर्ड RDD. So you will get a new RDD which is known as a filtered RDD, which contains the data only for the filter condition. But you will never modify the existing RDD. वो वहीं की वहीं रहेगी. ये आपकी फिल्टर RDD है. फिर आप इसके ऊपर कल को कोई और ऑपरेशन लगाते हो, मान लो आप उसमें एक नया कॉलम ऐड कर देते हो, तो यू विल गेट अ न्यू RDD. ओके. तो RDD क्या है? Resilient distributed data set means first of all it's a data set. So for example, you have a file and you load it into RDD. So that file is nothing but a data set. Distributed because a file is divided into partitions. Here a file is divided into partitions. We'll talk about that. Here file is divided into partitions. So it's, and each partition is on a different data node. So that is distributed. Okay. Resilient
is the most important word. Just read this line, then I'll tell you. Just read this paragraph. What do you mean by resilience? Okay, so I hope you have read it. So if I give you a file, that file in Spark is known as an RDD. RDD as in it's a resilient distributed dataset. We know it's dataset because it's a file. Distributed because it's divided into partitions and each partition is on a different machine. And resilient matlab, for example, if this partition is on a machine and that machine goes down, we have a replica and we also have a DAG lineage graph using which we can reconstruct this data. For example, if a machine goes down, we can recreate the RDD using the DAG. We will talk about that DAG. So if you look at RDD, RDD is immutable. As I told you, it's like you cannot change the content of an RDD. It's partitioned collection of objects. RDD is divided into small partitions. Automatically rebuilt on machine failure. If your machine goes down, RDD can be rebuilt using DAG. Okay. So let's consider that this is your data. Okay. This is a file which I ask you to load in a RDD. So guys, you loaded this file. It will give you what? It will become an RDD. So this is your RDD. Can anyone tell me how to load this file in Spark? If this is a file, how will you read this file in Spark? Can anyone ping me the command to read a file in Spark? Definitely files should be present on HDFS. But what is the command to read a file and create an RDD? No, Nishta, that's not correct. No, Vipul. Yes, Karan, that's right. Yes, Tanya, absolutely. Tanya's syntax is the most accurate one. What it says is ABC is the name of the RDD. SC is the Spark context and text file is the function that will read the file. So yeah, Karan, Tanya, that's the right syntax. Okay, Vipul, your syntax is also correct. Considering it's Spark 2.0, where the word Spark जो आपने लिखा है Vipul, that is referring to Spark session. The word Spark that you have written Vipul means Spark session. उसका मतलब Apache Spark नहीं है. Okay, that's an alias. जैसे कि करण या तान्या ने SC एक alias दिया है, आपका word Spark एक alias है. Then you are right. And Nishta, then you are also right, but आपने फिर वो alias miss कर दिया, जिसके बिना आपका फंक्शन चलेगा ही नहीं, राइट? क्योंकि वो alias देना बहुत जरूरी है, चाहे वो Spark context हो या Spark session हो. Very good. So you all are correct to some extent. But what Tanya's syntax is absolutely correct. But Nishtha and Vipul, आपने जो syntax दिया है वो RDD नहीं बनाएगा, वो data frame बनाएगा. So Nishtha and Vipul, Spark 2.0 में डायरेक्ट डेटा फ्रेम बनता है जो कमांड आपने दिया उससे. ओके, डेटा फ्रेम बनेगा डायरेक्ट. तो RDD बनाने का सिंटेक्स हमने देख लिया, which Tanya syntax you can refer to. Now what I am saying is
we want to filter all the G's from here. We want to remove all the G's from here. So we want to say, okay, say this RDD is ABC, as Tanya said, and then I am saying, okay, dot where, अगर वो DSL वाली बात करूं, DSL RDD पे लगता नहीं है कभी भी, okay? तो let me tell you properly. इस RDD को आपने मान लो एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल. अब ये डेटा फ्रेम का नाम है ABC. आपने इस पे वेयर क्लॉज लगाया, वेयर फंक्शन, वेयर से इस कॉलम का कुछ नाम है वैल्यू. So where value not equal to G. So you want to filter out all the records where you have G and you want to remove that. So where value not equal to G. So from here, from this side, all the data will be loaded into a new RDD or a new data frame, whatever. So if this was your original RDD, you put in some filter on it, then you will get a new RDD. Okay. How that RDD will look like is like this. Just it will not have these records. But now this is RDD2. This is your RDD2. So if this was RDD1, you put in some filter on it, you will get then RDD2. मतलब ये वाली RDD अपनी जगह पर रहेगी. ये RDD जहां थी वहीं रहेगी. ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल RDD का डेटा उसमें से G हट जाएगा. नहीं नहीं, ओरिजिनल RDD एज इज रहेगी. You will get a new RDD and there will be a directed acyclic graph, because I told you Spark is lazy. Guys, I told you Spark is lazy. So ultimately when I put a filter, so Spark is not actually going to create this RDD. No, Spark is so lazy. What it will do, it will create a DAG. It will say, okay Rahul, I have read the data in RDD1. फिर आप कहते हो okay, filter the data, put this filter. कहेगा okay Rahul, I have created RDD2. Okay, it will say Rahul मैंने RDD2 भी बना दी है. But actually ना तो उसने RDD1 बनाई थी अभी तक, ना RDD2. हमने पिछली क्लास में देखा भी था कि वो फाइल तक रीड नहीं की थी उसने, फाइल एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, लेकिन उसने बोल दिया कि RDD1 बन गई, RDD2 बन गई. तो ये इतना लेजी है कि ये इस तरह से डैग बनाता चला जाएगा, डैग बनता चला जाएगा, मतलब एक लंबा आपका डैग ऐसे बनता चला जाएगा. कब तक? जब तक कि आप फाइनली ये ना बोलो कि जो मान लो इधर बनी है RDD4 बनी है, मान लो आप जब तक ये ना बोलो कि RDD का कंटेंट मुझे दिखा दो, यू विल से RDD डॉट शो. अब इस समय क्या होगा कि स्पार्क जगेगा नींद से, उसकी मेमोरी में ये जो डैग स्टोर था उसको एग्जीक्यूट करेगा. It will first read the file, filter it. Okay, it will finally show you the data. So at that time, when you actually want to see the data, the RDD executes. And then these RDDs are independent RDDs, as in ये सब के सब आपके अलग अलग होंगे. ये RDD अलग पड़ा है, ये RDD अलग पड़ा हुआ है सिस्टम में. ओके, original RDDs are immutable. You cannot change their content. You will get a new RDD every time you apply a function on the original RDD. Okay, for example, if in this RDD you apply a uppercase function, getting it? If you apply a uppercase function to convert all these values into uppercase, you will get RDD3. Getting it, guys? You will get a third RDD which will contain the data in the uppercase, but the original RDD will still have the data in the lowercase, because RDDs are immutable. You cannot change the data of an RDD. You can only create a new RDD from an older RDD. Okay, and this is how the DAG keeps building. Vipul, it will not generate new files, it will generate new RDD. It will keep generating new RDD for each query. And the RDDs, they are logical concepts. मतलब
स्पार्क इज लेजी, तो वो आरडीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फाइल बनाएगा ही नहीं. विपुल गेटिंग इट? आरडीडी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फाइल तब तक बनेगी नहीं जब तक कि स्पार्क अल्टीमेटली एग्जीक्यूट नहीं करेगा. तो जब तक डैग बन रहा है विपुल, तब तक सिर्फ मेमोरी में इंफॉर्मेशन है कि ये काम करना है. तो इट विल कीप जनरेटिंग द आरडीडी इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, but it will not have any data inside those RDDs. Getting it विपुल? RDD खाली होंगे, मतलब सिर्फ उनमें इंफॉर्मेशन होगी उन्हें करना क्या है, उनके अंदर कोई डेटा नहीं होगा. हाँ, but when the final step happens, then yes, each RDD will have its own files. Then actual data will be loaded inside the RDDs, and then RDDs will have their own files. Okay, Vipul? Any doubt? So it will generate only the files for RDDs when they gets executed, but not until you want to actually see the data. Vipul, any doubt? Yes, correct, Vipul. Yes, yes. So when you finally want to see the data, at that time, it will run the DAG all the way from the starting till the last point. So for each RDD, there will be independent files which will either be stored in memory or on disk. That depends. You can control where you want to save a RDD, in memory or on disk. But yes, there will be files for each RDD at that time. Okay, clear? Vipul, is it clear? Guys, anyone, any question? Okay, Vipul, I'll answer to that question in a while. That's important. Gulzar, I'll answer to your question also. Okay. So for answering Vipul's and Gulzar's question, उसी से रिलेटेड जो चीज है वो ये है कि आखिर जब मैं एक आईडी से दूसरी आईडी बना रहा हूं उसे हम कहते क्या है? मतलब there are two kind of operations in Spark, guys. One is transformations and one is actions. So whenever you are running transformation on an RDD, you will get a new RDD. When you run a transformation on an existing RDD, it will result in a new RDD. So filter, map, join, these are all transformations. But when you run an action on an RDD, it will not give a new RDD, rather it will show you the final output. For example, show, collect, they are all actions. See, transformations and actions. Guys, please read this. But there are only two kinds of operations, transformations and actions. Just read. Just ping me once you have read it so that I can explain it.
गाइस आप अपनी मशीन पे भी ओपन कर सकते हो ये लिंक वैसे पैरेलली। गाइस मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, तो प्लीज एक बार आप लोग अपनी मशीन्स पे ओपन कर लें उसे। Guys, anyone, any question? Is it clear? Have you all read this? So transformations and actions, स्पार्क में यही दो चीजें हैं, इंटरव्यू में यही पूछते हैं, which all transformations and actions you are aware about. So transformations as in you have an RDD, you apply a transformation, you will get a new RDD. Okay. For example, you want to do filter, you want to do map, anything. Okay. मैपिंग एज इन कल हमने या पिछली क्लास में हमने मैपिंग ऑपरेशन एक करने की कोशिश की थी, जहां हमने स्प्लिट किए थे कॉलम्स, राइट। एक रो को स्प्लिट किया था कॉलम्स में, वो भी एक तरह की मैपिंग है, वो एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप कलेक्ट, काउंट, शो ये सब करते हो तो वो क्या होता है, वो होता है एक्शन। ओके। So if you see here on my screen, there are different kinds of transformations. Guys, am I audible? So guys, if you can see my screen, so I'm explaining you certain things. I have SC, which is nothing but the Spark context, right? SC is the Spark context, which is using yarn. Okay, my master is yarn.
I'm not using Mesos or anything, and I'm inside PySpark shell. I'm using sc.parallelize. So what it do is, say if you have an object, if you have an array, you want to convert that array into RDD. So what I'm saying is, this is an array, right? This is simply an array of words. I want to convert an array into RDD. So I will say sc.parallelize. Parallelize क्यों? Because an RDD contains multiple partitions which can be processed in parallel. So I'm giving it a name, say ABC equals to this. And then I'll say, okay, ABC is what? So ABC is a parallel collection RDD. So guys, I got an RDD. I'm pinging you all. Please follow along. So if someone gives you an array and asks you to convert it into an RDD, then you will use sc.parallelize. sc.parallelize is a function to convert a value, which can be an array, a complex data type like a dictionary or anything, into RDD. So ABC is a RDD. Please run that and let me know if it's working. So guys, let me know if you are able to create an RDD. Ideally, it should not take even lesser than a second. So we have created an RDD here using Spark context dot parallelize, which is just converting an array into an RDD. But as I told you, an RDD contains multiple partitions, right? So how to see, given your RDD, how many partitions it contains? The number of partitions which are inside your RDD. So using this get num partitions function, I see that my RDD is divided into two partitions. And I can increase or decrease the number of partitions, okay? I can increase and decrease the number of partitions to get more parallelism. Guys, any errors you are getting, like why it's taking so much time? Jishan, you are able to do it? Is your Hadoop working? So ये queries चल गए हैं आपके दोनों जो मैंने पिंग किए हैं? Tell me कि number of partitions कितने आ रहे हैं आपके? आप लोगों ने Hadoop भी नहीं स्टार्ट किया हुआ है क्या?
Guys, I'm moving ahead, okay? So, perfect, Tanya. Thanks a lot. कितने partitions आ रहे हैं तान्या आपके by default? Okay, Rahul, thanks a lot. So now, guys, see, अभी हुआ क्या, यहाँ डेटा हमारा कम था, तो नंबर ऑफ पार्टीशंस कम है. हाँ, किसी का एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बिकॉज डेटा बहुत कम है. But consider that you are reading a huge file, and let's see how many partitions you get at that time. So I need to exit out of it. आप लोग एग्जिट मत करना, यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल नहीं है. तो आई एम क्रिएटिंग अ फाइल nano emp So guys, I have a file. Okay, I created a file which is a emp file, but this is on my local. So using hdfs dfs hyphen put, I will put this file where? On Hadoop. कोई मुझे बताएगा ये कमांड क्यों नहीं चली? एक छोटा सा गलती है इस कमांड में. Can anyone tell me? Very good, Nitika. Thank you. Just want to see how attentive you are. Okay. So this file is went on to Hadoop. Okay. So I'm reconnecting to my PySpark. So guys, if you have a variable, if you have a data type, an array, you can convert that into a RDD using sc.parallelize function. But if you have a file, you have to use sc.text file, and inside that you have to give the file name. And let me create a variable fl equals to this. Okay. Now what is fl? So fl is what? It's an RDD, but which kind of RDD? It's a map partition RDD. Earlier the RDD we got was parallel collection RDD. Parallel collection RDD. Now it's a map partition RDD. Now let me see the data. So dot show. So guys, now this was like a transformation which just created a sort of a DAG. But when I run this action, it actually will read the file and show me the data. Dot show runs on a data frame. Okay. So RDD पे हमें collect function चलाना पड़ता है. So it's running collect function. So it's running what? It's running the Spark job, and see, it shows me the data. Okay. This is the data. So guys, all of you can read the airlines file. So this is the way to create an RDD from a file. But before even you go ahead, let's see the number of partitions here. The number of partitions are still 2. But if I want to change the number of partitions, I can change it here. When I am saying sc.text file, and let me say 4, fl dot get num partitions. Oh, it created 5. I'll look into that why it created 5. But yeah, can you just try it out? While you are reading a file, you can mention the number of partitions. I'll check into it why it is 5.
Guys, please let me know once you are able to read a file by specifying the number of partitions. See the number of partitions that it gives you. Ideally, it should be equal or lesser than this number. Nishtha, what is the warning? Tell me. तो नंबर ऑफ पार्टीशंस जितने आप मांगोगे उससे कम हो या इक्वल ही होने चाहिए, ज्यादा तो नहीं होते. आई चेक कि ये 5 क्यों दे रहा है. Sir, Yes. sir, the warning is the short circuit local reads feature cannot be used because libhadoop cannot be loaded. That's a generic warning. Ignore it. अगर आप देखोगे जब आपने स्पार्क स्टार्ट किया होगा ये वार्निंग ऊपर भी कहीं आ रहा होगा आपको, शॉर्ट सर्किट रीड्स वाला. तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं जिशान, एरर या वार्निंग? बट आउटपुट आया जिशान, आपको वैल्यू दिखा रहा है वो नंबर ऑफ पार्टीशंस की. That's fine, Nista. The another thing is, if you are creating an RDD from an array, at that time also you can specify the number of partitions. So you ask for 5, it gave you 5, for example. What I'm trying to explain you is, you can definitely increase the number of partitions, but उसके लिए data भी उतना होना चाहिए. For example, I asked for 49 partitions, but the data इतना ही है कि वो 27 पार्टीशन में डिवाइड हो सके. मतलब आप ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली बोलो कि 400 पार्टीशन दे दो लेकिन रिकॉर्ड 2 ही है सिर्फ. तो that's how system behaves. Spark puts its own intelligence also. Okay. So guys, please try this also. Try this also. Excuse me, sir. Yes. सर यहाँ जो वन शॉर्ट सर्किट डोमेन सॉकेट फैक्ट्री आ रहा है ये f1 डॉट कलेक्ट के कमांड के बाद आ रहा है. मगर डेटा दिखा रहा है आपको या नहीं दिखा रहा? सर इसके बाद नहीं सर, सिर्फ f1 शो तक तो आप जैसा चला था मेरे में, पर f1 कलेक्ट के बाद वो कोई बड़ा लंबा, इससे आगे बड़ा लंबा एरर कोई दिखा रहा है कि ये पिंग मी दैट. तो मैंने ट्राई किया था कि वो वर्चुअल मशीन से कुछ
कोई नहीं हो पाता। मैंने ट्राई किया है, भी 3 बार ट्राई किया है कि आपको चैट्स में पिंग करने का, पर नहीं हो रहा उसे। माय पॉइंट है, आपको कोई वार्निंग आ रही है, आप इग्नोर कर सकते हो अनलेस आ रही है और आप काम ही नहीं कर पा रहे। वार्निंग्स यू कैन इग्नोर। वार्निंग क्यों आती है? बिकॉज योर सिस्टम सेटिंग्स में भी डिफरेंट देन माइन, तो यू मे गेट वार्निंग्स फॉर सम कमांड जो मेरे पे चल जाएंगी। बट इशू इज कि जब आपको एरर आए तो लेट मी नो। तो माय पॉइंट इज कि अगर ये कमांड चलाई और अगर आपको आउटपुट आ रहा है, इवन दो उसके साथ वार्निंग भी आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ सर, आउटपुट नहीं आ रहा ये। सर मैंने वही वैल्यूज डाली थी जो 1 2 3, और जो वाटरफॉल 4 जो आपने डाला था ना एबीसी वाले में, वही वैल्यूज डाली हैं। योर प्रेजेंटर गुलजार, प्लीज शो मी। सर यहाँ इसके आगे से, सर दिख रही है स्क्रीन अभी? ये F1 कलेक्ट यहाँ है, इसके आगे से इतना लंबा ये हमारा हाँ क्या आ रहा गुलजार, है? बट आप पहले वो तो बताओ, F1 ऑब्जेक्ट कहाँ लोड किया आपने? F1 कहाँ है? F1 ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया आपने? हाँ, यहाँ पे है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। sc.text फाइल emp। अब हम देखते हैं कि emp फाइल आपके सिस्टम में है भी कि नहीं। तो जरा इसको नीचे स्क्रॉल करो, एक एक करके स्लोली स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था डैग बनाएगा और ये फाइल ढूंढेगा। अब देखो, इनपुट पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, क्या कह रहा है वो? नीचे स्क्रॉल करो गुलजार, स्क्रॉल डाउन। ये सर एरर जो है वो मेरे कोड में नहीं है, ये आपका फाइल नहीं मिल रहा है उसको। देखो थर्ड लाइन, इनपुट पाथ डज नॉट एग्जिस्ट, थर्ड एक मिनट लास्ट एक लाइन, मिनट। थर्ड लास्ट इनपुट पार्ट यहाँ पे, जहाँ कर्सर रखा हुआ है। लाइन। emp फाइल आपने ऑलरेडी बना के रखी हुई है? ऐसा रह गई थी, मतलब फाइल क्रिएट ही नहीं हुई इसलिए आ रहा है। हाँ जी गुलजार, मैंने वही बताया था ना आपको पहले, फाइल आपको पहले से बना के रखनी है, जो मैंने अभी बनाई थी अपनी स्क्रीन पे। डू वन थिंग, इसको अभी रिजॉल्व करते हैं, इस स्क्रीन को खुले रहने दो, एक और ब्लैक विंडो खोलो। ls करो यहाँ पे, ls। एंटर। यहाँ पे एक emp नाम की फाइल बनाओ। एक्चुअली मुझे तो पहले बड़े दिन से मेरा ये क्लाउड रहा जैमर था, इसलिए कोई कमांड याद नहीं हो सके। ठीक है, कंट्रोल मुझे दे दो वापस। Guys, can anyone, sorry Nishta. Guys, can anyone tell me what is the point of increasing or decreasing the number of partitions? Partitions बढ़ाने या घटाने से क्या फायदा है?
गाइस एनी आइडिया हडूप में ज्यादा पार्टीशंस होने से क्या फायदा होगा? नहीं 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 निष्ठा, आरडीडी तो एक ही है, उसको पार्टीशंस में डिवाइड ज्यादा में कर दिया आपने। आरडीडी थोड़ी बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, आरडीडी तो एक ही है, नंबर ऑफ पार्टीशंस यू आर इंक्रीजिंग। इट्स लाइक एक बुक है, उसके आपने 10 छोटे छोटे हिस्से कर दिए। Yes, Nitika Nishta, faster processing, very good. Because it's more parallelism. It's more parallelism. What do you mean by that is, yeah, if there are more partitions, more parallel tasks can run, right? That's the benefit. But can anyone tell me कि इसकी प्रॉब्लम, इससे नुकसान क्या होगा? ज्यादा पार्टीशंस होने से फायदा तो हमें पता लग गया, नुकसान क्या हो सकता है? Very good, Aditi. Yeah, that's one point. Yeah, Nitika. Yeah, Aditi and Nitika, your answer is same. Yes. Okay, Vipul. Okay. Yeah. So absolutely, you guys are thinking right. मेरे पास एक आरडीडी है, मैंने उसमें नंबर ऑफ पार्टीशंस बढ़ा दिए, तो उससे टास्क पैरेलली बहुत ज्यादा चल सकती हैं उस पे, राइट? विच इज गुड. बट कंसिडर दैट ईच पार्टीशन कंटेन्स वेरी लेस डेटा, बिकॉज डेटा ही ज्यादा नहीं था, तो अननेसेसरी मैंने बहुत सारी टास्क चला दी, मेरे सिस्टम की रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, मेरे मेमोरी कंज्यूम होंगी, ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी, और कई बार तो मान लो कि इतने पार्टीशंस हैं कि मुझे 100 मशीनों की जरूरत पड़ गई, लेकिन सिस्टम में 90 मशीन अवेलेबल है, तो मेरी जॉब वेट ही करती रहेगी कि कब उसे 100 मशीन मिले, कब वो कंप्लीट हो, अपना काम करे। तो मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है, इसीलिए there is an optimal number of partitions, okay, that ideally should be selected based on the data set. We should not randomly say, okay, I need 1000 partitions. So it should be very intelligently decided, discussed among the team by looking at the file size and accordingly decided. What at max you can do is, say each partition is of the block size 128 MB. So you can divide the total file size by 128 MB, and then the output that you get, you can say that number of partitions. But there are lot of other logics behind identifying the number of partitions. So that's one thing. But as I told you, I will not be working on the RDDs. I will directly be working on what? Data frames. We are not going into this. So what I will be doing is, I will be using SQL context to create data frames, right? SQL context dot read dot CSV. But it says, okay, this needs one argument. So here, if you see, guys, I will be using what? SQL context to read CSV, right? So that I can directly get a variable which is a data frame. So all of you can do this. Now if you read the same file, you will get schema. See, you have the schema. Column 1, column 2, column 3. Right? In RDD, you didn't had any schema, like 3 columns, you didn't had it.
बट गाइज एक प्रॉब्लम ये है कि मैं स्पार्क 2.0 यूज कर रहा हूँ, आप स्पार्क 1.0 यूज कर रहे हो, उसमें ये .csv फंक्शन आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो मैंने जो पिछली क्लास में तरीका बताया था आपको वो करना पड़ेगा, .text फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और वो थोड़ा लंबा पड़ेगा जो हमने स्प्लिट वाला यूज किया था, आपको इस तरह से मिला होगा। देखो आप ये चलाओगे तो उसने सारा डेटा एक पर्टिकुलर कॉलम में ही डाल दिया, वैल्यू नाम के कॉलम में। तो आपको इसको स्प्लिट करना होगा, तो वो पिछली क्लास में जो मैंने बताया था वो फंक्शंस मैंने डाल भी दिए थे ऑनलाइन, आप वहां से यूज कर सकते हो, बट उसको हम बाद में कर लेंगे। लेट्स मूव अहेड। We are using data frames now, so SQL context.read.text, read.csv, whatever. Yes, people, yeah, you can say that. Still it will be DAG, but of data frames, and data frames are also like RDDs, immutable, partitioned, distributed, resilient, everything. But the only additional thing that happens with data frame, they have a schema. They can be directly queried using DSL or the Spark SQL. So as I told you in the last class, this is your data frame. You will say pt.show. You can see its content. Now this means it's running Spark job, and this is the output. You need to split this output the way I told you in the last class, or else if I have this thing available, because I directly have this, I can directly do this. Yes, Tanya, DFs are also partitioned. Yes. So these are my columns. I can say pt dot select, and if I say star, so guys, this is a transformation. Then I'll put another which is like filter, and I'll say where underscore C0 is greater than 2. Okay, this is another transformation. But when I say show will be action. So transformation, and then action. Okay. So if you look at this, okay guys, so you are getting it. I am saying data frame पे querying is easy because it has a schema. So data frame dot select everything, filter the data where underscore C0 is greater than 2, and then show. So it created a DAG, transformation, and then finally an action. Okay. Okay. So this is known as DSL. I told you, I'm pinging you this. This is known as DSL, domain specific language. So Gulzar, does that answer your questions? जो आप शुरू में पूछ रहे थे फिल्टर कैसे किया जाएगा? The only difference is वो फिल्टर आप RDD पे पूछ रहे थे, मैंने आपको RDD पे ना बोल के डेटा फ्रेम पे करवाया, because we really don't need to go that much into RDD. हमने RDD के कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ देख लिए, which is text file, parallelize, get num partitions. But when you actually work in a company, you avoid RDD, prefer data frames because of the ease of use. So you create a data frame by SQL context.read.csv, read.text,
रीड डॉट टेक्स्ट में बस लंबा तरीका है, आपको एडिशनल कॉलम्स खुद से बनाने पड़ेंगे स्प्लिट कर करके, उसके बाद आप DSL यूज कर सकते हैं। ओके, मैं और भी DSL में मतलब शो की जगह और एक्शंस क्या होते हैं, कलेक्ट is another action. So whenever you run a action, guys, whenever you run a action, स्पार्क जॉब उसी समय चलती है। ट्रांसफॉर्मेशन पे स्पार्क जॉब कभी नहीं चलती। स्पार्क जॉब कब एग्जीक्यूट होती है, जब उसको एक एक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, count the number of records in the data frame. Only one record because I applied a filter. Say it's 3 greater than 0, 1, 2, 3. Let's see. Yeah. So guys, if you see the Spark UI, how it will look like, what I'm doing is, yeah. So if you look at, guys, होता क्या है, जब मैं किसी स्पार्क सेशन के अंदर घुसा हुआ हूं, आई एम इनसाइड अ स्पार्क सेशन, so that spark session, the spark session is denoted by a application. Now within this application, all the queries that I'm running are like jobs. So there are 10 jobs which I have executed. Show, collect, count, जैसे 0 से लेके 9 की जॉब्स मैंने चला ली हैं. Let me run once more this count, but let me change a query here, say C1. Now when it saw this action, it ran a job. This job is completed. Now 10 की जगह यहाँ 11 दिखाना चाहिए. Let me refresh this. Wait, 10 की जगह 11 क्यों नहीं दिखा रहा? मतलब 8, 9. Let me refresh it. Okay, 14. 14 because I think वो पहले रिफ्रेश नहीं हुआ रहेगा, और भी मैंने काउंट बहुत बार चला दिए हैं. तो this was the latest one which I just executed. Let me open the logs. हाँ, तो ये जो लेटेस्ट मैंने क्वेरी चलाई है, from a data frame I want to select and filter something. So guys, one important thing, if you look here, yeah, Nishtha, just 1 second, that if I'm running one query again and again, we already have persisted the data for that query. So if you look at कि ये जो query अगर same query बार बार चल रही है, तो it's tagged to the same jobs, job 12 and 13, like 12 and 13 were the copy jobs, like
same things was done in 12 and 13, same thing was done in 10 and 11, same thing was done in 8 and 9. That means they were referring to the same data. Okay. And this is the DAG, like how the DAG looks like. It's reading the data from an RDD. Then there is a map partition RDD and all. So this is just a detailed explanation which I'm not going into. For a data analyst or data scientist, I'm not going into this DAG explanation. There are certain things known as garbage collections. Garbage collection क्या होती है? एक important point है. GC time, as in the garbage collection time. Whenever you create any code, you create certain variables, right? These variables, they got created in the system memory. But जब आपको उनकी जरूरत नहीं है, then they are garbage. मान लो ये वेरिएबल आपको अभी काम का था, लेकिन 1 घंटे बाद आप उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो इट्स लाइक गार्बेज. सो गार्बेज कलेक्शन शुड हैपन, मींस जो मेमोरी इसने ले रखी थी, दैट शुड बी फ्रीड अप so that other resources can use that memory. So that is known as garbage collection. Any variable or object which is no longer used should be removed from the system memory. This is done automatically by Java, so you don't need to worry about it. But yes, you will always see this GC time. Time, if you read time that the executor spent paused for Java garbage collection. So if total time taken was like 71 millisecond, 0.1 second was taken by the system for garbage collection. Then there was some read operations that happen, shuffle sort, as we normally talk about. Okay. So you guys can read more about these things if interested. But in the interest of time, we are just moving out of this. Okay. Just see, I'm pinging you this link. If you guys can access it, I don't think you can access this link. Just try to refer it. I don't think this will open on your machines. Please let me know if it's opening. So Gulzar, that garbage collection time interval is decided by Java machine only, not by us. But if you want, you can forcefully do the garbage collection also. So there is this GC function, Gulzar. We normally need to call the GC function in our code, and this is a garbage collector. I'm just sharing the link. If you're interested, you can read about these things. Garbage collection is a very, very important concept. No, Gulzar, we cannot, we should not. But we can force the garbage collection. Okay? By running the garbage collection commands. Okay guys, we'll take a 15 minutes break and then we will join back around 12:30. Yeah, Nishtha, so you won't be able to access it, leave it. If you have an account on Amazon, you can try to log into your Amazon account and see if this is accessible. But yeah, I think it won't be accessible. And Gulzar, for your knowledge, in Java, when we talk about garbage collection, right? So this is the memory structure, the Java memory structure. If you are interested, read about it. The Java memory is divided into multiple parts. The permanent generation, the old generation, and the younger generation. So these are the 3 generations. मतलब Java का जो memory होता है, JVM का जो memory होता है, वो इन 3 parts में divided होता है internally.
So you can read about it if you're interested. Young generation and old generation and the permanent generation. Within that, what is this Eden space and survivor space? Okay. So guys, we will connect after 15 minutes.
Guys, let me know if you are back and my screen visible. Okay, so where were we? Like we created a data frame, we did DSL on it. I'm not creating a table out of it. जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, you can create a table and then you can run the SQLs on that also. Okay, but this is how you can work on it. Remember, there are certain transformations and then you have actions. Actions can be any action that you can use. For example, you have data frame.count, which will count the number of rows. You have data frame.collect, which will show you the data. Okay. Here, if you see, this is your first row. This is like row, first row, second row, and third row. Okay. So this is how it shows you the data. Then you have another actions also. ये मैं आपको सारे actions बता रहा हूँ जो finally data print करके देते हैं. Count, collect, show. Then there is something known as first. First is to see the first row. Like collect and show will return all the data, but you want to see only the first few records. Okay. So what you will do, you will use first. That will show you only the first row. But then there is another function known as take. When you use take, it says take function is missing one required argument. There is one required argument which is a numeric type. That means the number of rows that you want to see. So first returns you the first row. Take returns you the first few rows. कितनी वो आपको बताना पड़ेगा. For example, you want to see the first 2 rows. It will show you the first 2 rows. If you want to see the first, say 20 rows, it will show you the first 20 rows. अब हमारे डेटा में 3 ही है, तो उसने आपको तीनों शो कर दी. तो if you look here, you have collect, count, first. Okay. And then there is take also, which is not mentioned here. So you can collect or show, you can count, you can see first and take. There is save as text file. What is this? For example, you have a data frame. You want to convert that into a HDFS file. Converting a data frame into HDFS. देखो, अभी हमने ऊपर क्या किया था? sc.text file. We were reading a file. Okay, we were reading a HDFS file. Using this also, we were reading a HDFS file and converting it into a data frame. But what if you have to convert a data frame into a file? So you have this function which is like save as text file. Okay, save as text file. You give the path where you want to save that, say emp1. Okay. So save as text file is not available in a data frame. This function is not available. See, at Python हम सबने किया है. We know this is an attribute error. Data frame object like PT is a data frame object, is an object of the class data frame. PT is an object of the class data frame. It has no attribute save as text file. So save as text file available नहीं है. Let's see, हमने RDD बनाया था. Yeah, FL guys, FL was an RDD, right?
I'm using fl dot this, so it's working. So you can convert an RDD into a HDFS file using this function. It's done. So you can convert an RDD into a HDFS file using save as text file function. So I'm pinging you this. Just do this. Meanwhile मैं आपको data frame का भी function बताता हूँ कौन सा है. Let me just check it. So there are distinct functions for each of this. Okay. तो नितिका आपका टेक फंक्शन ये करता है कि आपका अगर डेटा फ्रेम में 100 रिकॉर्ड्स हैं और आपको फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स देखने हैं या फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स देखने हैं तो टेक फंक्शन, जबकि फर्स्ट फंक्शन ओनली रिटर्न्स यू द फर्स्ट रो, बट यू वांट टू से फर्स्ट 10 या फर्स्ट 20, सो देन यू हैव टू यूज दिस टेक. उसके बाद मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको एक आरडीडी को एचडीएफएस में कन्वर्ट करना हो, अब हम रिवर्स काम कर रहे हैं, आरडीडी को एचडीएफएस में या एक डेटा फ्रेम को एचडीएफएस में, तो उसके कमांड्स क्या हैं? तो आरडीडी डॉट सेव एज टेक्स्ट फाइल, it will create this emp1 वाला file. You can check this in your HDFS. और अगर आपको डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है तो we have this, like data frame name is pt.write.format.save, means you want to write this in a format which is like CSV and save it as this file. So this is the syntax. Yeah. जब आप डेटा फ्रेम बना रहे थे तो सिंटेक्स क्या था? .read.csv. You are reading a CSV, right? You are reading a CSV. But once you data frame, you can write that as a CSV. You want to write that in which format here? It's an XML. Okay. For example, let me create a JSON file out of it. You want to create, say, a JSON file out of it. So guys, what I did, I had a data frame. I say data frame dot write and write it in a particular format, which is like CSV, then the file name, or JSON, then the file name. तो मुझे इस तरह की फाइल्स बन गई होंगी HDFS में. Let me check that. But before that, I am pinging you these commands. Run
Damini, can you please make me presenter? Damini, you are there? Meanwhile, Damini is making me presenter. Do let me know if you guys are able to run that command and see the output file. Like data frame को file में convert कर दिया आप लोगों ने, और वो फाइल HDFS में दिख रही है कि नहीं? RDD को करके देखो पहले निष्ठा. RDD dot I said the RDD dot save as text file, right? Save as text file. ये वाला फंक्शन यूज करके देखो for RDD. And if you use a data frame, you have to use this write dot save. तो RDD का अलग फंक्शन है, डेटा फ्रेम का अलग फंक्शन है. सो RDD के साथ आपको सेव एज टेक्स्ट फाइल यूज करना है. ओके निष्ठा, डेटा फ्रेम का दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं. Guys, let me know if these functions are working for you. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर पीटी राइट फॉर्मेट वाला जो आपने कमांड भेजा है, तो क्या ये एक ही कमांड है या पीटी फॉर्मेट के दो अलग कमांड है? एक सेकंड. CSV और जेसन वाला. बता रहा हूँ एक सेकंड. हाँ दोबारा बोलो गुलजार, क्या क्वेश्चन था? सर ये पीटी राइट फॉर्मेट, एक CSV और एक जेसन वाला जो कमांड है, क्या ये आपके चैट में एक ही कमांड है या दो अलग कमांड है? नहीं, वो एक ही कमांड है आपका. जो PT है वो तो डेटा फ्रेम का नाम है, आपकी डेटा फ्रेम का नाम कुछ और हो सकता है. एंड उसके बाद डॉट राइट डॉट फॉर्मेट डॉट सेव,
ये आपके 3 फंक्शंस हैं जो एक साथ ही कॉल होंगे। ठीक है सर। Damini's phone is not reachable. I'm just trying to reach her. Damini, if you're on the call, please make me presenter. Guys, give me 2 minutes. I'm calling Alok or Karan. तो guys, Alok is looking into it. Meanwhile, किसी को कोई question या error आ रहा है तो please let me know. Are you able to create a file from an RDD?
Nishta, is it working now for you? Converting an RDD to a file or converting a data frame to a file? What is the error, Nishta? Yeah, meanwhile, you guys can try and ping me the error. Rahul, perfect. That's good. So, okay, that's a good point. So, Rahul, what happens is ये डायरेक्टरी बनाता है हमारे लिए. ये जो कमांड्स होती हैं दे क्रिएट डायरेक्टरीज और उन डायरेक्टरीज के अंदर एक्चुअल फाइल्स होती हैं. ओके, बिकॉज कंसिडर दैट कि आपका डेटा फ्रेम बहुत बड़ा है साइज में, तो आप कभी भी एक सिंगल फाइल में उसको स्टोर नहीं करते. तो whenever you are running a command that will create a directory and उस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स बनेंगी and just see the content of those files. It should be JSON format like curly braces के अंदर होगा. Each record will be inside a curly braces, Rahul. Just confirm if it is like you are able to look at the data. So mostly जब भी हम HDFS पे कुछ राइट करते हैं तो we should give the path of a folder and उसके अंदर फाइल जो है वो स्पार्क या मैप रिड्यूस खुद बनाता है कि उसको कितनी फाइल्स चाहिए. Hello.
Guys, I am pinging you a program. Please create a file with Nano. Use Nano, create a file, and then I'll tell you like what to do. So I'll tell you like what we need to do. देखो अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे, यू आर डूइंग इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग. अभी तक आप लोग इंटरेक्टिव एनालिटिक्स या इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग कर रहे थे, जहां पर आप शेल के अंदर ही काम कर रहे थे. बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता. रियल वर्ल्ड में ये सारा जो काम आपने किया वो एक डॉट पाई फाइल में हम बनाते हैं. तो अल्टीमेटली जो कोड मैंने आपको भेजा है उसको एक डॉट पाई फाइल में सेव कर दो. ठीक है. एंड देन लेट मी एक्सप्लेन यू कि इसमें हो क्या रहा है. सबसे पहले हम एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. वी आर इंपोर्टिंग द पाई स्पार्क पैकेज यूजिंग विच वी आर क्रिएटिंग स्पार्क कॉन्टेक्स्ट. कोई भी एक फाइल बना लो गुलजार, उसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए डॉट पाई. तो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है जिसको हम रन करेंगे अभी. So Gulzar, you can say nano test.py. Just use nano and inside this file copy paste this entire program and then I will explain you ये program क्या है, इसे कैसे रन करना है. एक्सक्यूज मी सर, सर ये पाई टेक्स्ट डॉट पाई ये जुपिटर में तो नहीं बनाना? नहीं, आपको जुपिटर तो आप एक्सेस ही नहीं कर रहोगे ना नैनो में, उसमें सॉरी वीएम में. वीएम में आप टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल में ये फाइल बनाओ, उसमें प्रोग्राम कॉपी कर दो क्लाउड रा में. अच्छा सर, एक्चुअली अच्छा एक बार फाइल क्रिएट तो फाइल क्रिएट करने का एक बार कमांड समझा दो सर. एक्चुअली बड़े दिन से क्लाउड रा जैम था मेरा, इसलिए. यही जो मैंने आपको बताया ना, नैनो स्पेस फाइल का नाम एंड देन कॉपी पेस्ट दिस कंटेंट देयर. अब आप कॉपी पेस्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे यहाँ से? हाँ कर लूंगा, अगर नहीं हो पाया तो टाइप कर दूंगा. हाँ तो टाइप कर लो. वी हैव टाइम. आई डोंट नो, स्क्रीन शेयर इज नॉट हैपनिंग. तो दैट्स व्हाट राहुल मींस. Using Spark, you can generate the JSON files or CSV files, anything, provided you have a proper RDD or a data frame. तो गाइज बाकी लोग भी अगर अपने RDD डेटा फ्रेम को फाइल में कन्वर्ट कर पाए हो तो प्लीज लेट मी नो. उसके बाद ही हम ये प्रोग्राम पे जाएंगे जो मैंने अभी पिंग किया है.
हाय आलोक। Thanks, Alok. Guys, please let me know if you are able to see my screen. Alok has made me presenter. Okay, perfect. So let me explain you what we were doing. I told you कि हम स्पार्क में जब भी काम करेंगे हम दो चीजों पे काम करेंगे, या तो आरडीडी या डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम प्रेफर्ड होता है क्योंकि उसमें स्कीमा होता है, और अगर आपको किसी आरडीडी या डेटा फ्रेम को HDFS फाइल के फॉर्म में सेव करना है तो हमारे पास ये दो अलग अलग कमांड्स हैं। तो मैंने डेटा फ्रेम को CSV और JSON दो फॉर्मेट्स में कन्वर्ट किया। This should be the name of the directory, not the file. This should be the name of the directory. So let me show you. HDFS DFS-ls जब मैंने चलाया तो अब आप यहाँ पे देखेंगे मुझे .csv और ये .json एक्चुअली इस नाम के फोल्डर्स मिल जाएंगे। ओके, तो गाइज अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे D लिखा हुआ है, राइट? So you have this D written here, means these are your directories. So if you want to see the content of these directories, HDFS DFS-ls, and just type in this, so you will see there are two files. हमने पहले भी देखा था, एक हमारी सक्सेस फाइल होती है, लेकिन ये है डेटा फाइल जिसको हम पार्ट फाइल कहते हैं। ये एक्चुअल फाइल है जो हमारी पार्ट फाइल है जिसमें एक्चुअल डेटा होता है। तो या तो आप इसको ओपन करके इसका कंटेंट देख लो, तो मैं आपको बताता हूँ कमांड क्या है। देखो, dfs.csv एक्चुअली मेरी डायरेक्टरी है, तो डायरेक्टरी का कंटेंट मैं कभी कैट कमांड से देख नहीं सकता, तो उसके लिए मैं यहाँ बैकस्लैश लगा के स्टार लगा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई भी डायरेक्टरी है, उसके अंदर हजारों फाइल्स हैं, आपको सबका कंटेंट देखना है, तो आप डायरेक्टरी /* और यहाँ कैट कमांड लिख दो, तो इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स होंगी उनका कंटेंट आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा कंटेंट है, और मैंने उसी डेटा फ्रेम को जेसन में भी कन्वर्ट किया था, सेम डेटा फ्रेम को। तो देखो यही ऊपर वाला सेम डेटा यहाँ जेसन फॉर्मेट में दिख रहा है। गाइज, मैंने डेटा फ्रेम को CSV और जेसन दो फॉर्मेट्स में सेव किया है, और दोनों का कंटेंट आपको HDFS पे दिखा रहा हूं मैं। ये प्लीज लेट मी नो इफ यू आर ऑल्सो एबल टू डू दैट। हाँ गुलजार बोलो। एक्चुअली जो टेस्ट पाए क्रिएट करने के बाद उसमें जो है जैसे जैसे कमांड लिखते वक्त जो 3 एरोस इंडिकेट आते हैं ना, अगला कमांड का लिखना होता है। हाँ जी, हाँ सर एक्चुअली मैंने जो टेस्ट फाइल क्रिएट की थी उसके बाद अभी गुलजार जो टेस्ट फाइल को, अभी टेस्ट फाइल को इग्नोर करो। अभी मैं उसके पहले वाला काम आपको बता रहा हूँ। टेस्ट फाइल में अभी दोबारा बताऊंगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ जो हमने अभी सुबह से कर रहे हैं, हम ये वाला सारा काम कर रहे थे ना, कि हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, डेटा फ्रेम पे हमने DSL चलाया, फिर फाइनली मैं कह रहा हूँ इस डेटा फ्रेम को
हम इस कमांड के थ्रू HDFS में सेव करना चाह रहे हैं। तो ये कमांड चला दिया आपने, आपका डेटा फ्रेम बन गया था PT नाम का। गाइस प्लीज लेट मी नो, हाँ सर, राहुल ये कमांड, डन इट, एनीवन? हाँ सर अभी स्लो है, चल रहा है, अभी स्लो है, ओके, निष्ठा, चला रहा नितिका, हूँ। are you able to create a HDFS file from a data frame? ओके, नो प्रॉब्लम। सो गाइस देखो, नॉर्मली होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एक फाइल दी जाती है जिसपे आपको कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स करना होता है। आप उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स करोगे स्पार्क में, और फाइनली जो भी आपका आउटपुट होगा वो आप वापस किसी फाइल में सेव करना चाहते हो। तो ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग। वो जो फाइनल आउटपुट फाइल होती है, हो सकता है कि वो आप किसी दूसरी टीम को भेजना चाहते हो फर्दर, तो you need to convert the data frame into so guys, I'm waiting. Okay, either you create a RDD and convert it into a file, or create a data frame and convert it into a file. पुट्टी कहाँ है यहाँ? पुट्टी तो है ही नहीं, मतलब व्हाट हैपेंड? आई डिडंट गेट इट। निष्ठा, ये देखनी है क्या स्क्रीन आपको? नितिका, तान्या, जिशान, प्लीज लेट मी नो if you are able to create a HDFS file from a data frame. Jishan, are you facing any issues or is it working? It's a very simple command, Jishan. Okay, Nitika, is it okay? Done. Jishan, are you able to do this, like running these commands? Okay, but you understood, right? It's very important to read a file as well as write a file in HDFS. Both are very important, and in interview they ask you these commands. So this should be name of directory, not the file. And finally, you will be able to see those files in HDFS, and then you can see the content of those files or folders. Nishtha, I am making you presenter. Just show the screen. तो पहले तो आप वो करो ना, HDFS DFS-LS करो ना।
आपने df1 बनाया ना निष्ठा, df1.json df1.csv, राइट? और ये फोल्डर है ना, ये फाइल नहीं है। हाँ, परफेक्ट। आपने एयरलाइंस डेटा यूज किया होगा, ओके। और जेसन में देखिए इसी को। नहीं, आपका जेसन सही नहीं बना, वापस से दिखाओ एक बार। जो आपने कमांड लिखी है, कहाँ लिखी है? ना ना ना, जेसन स्पार्क की कमांड दिखाओ। स्पार्क आपने क्या लिखा है? अलग टर्मिनल खोल लिया करो, ऐसे बाहर बाहर मत निकला करो। आपने स्पार्क का कमांड कहाँ है? आप दोबारा से स्पार्क का सेशन ओपन करो, पाई स्पार्क दोबारा ओपन करो, दूसरे टर्मिनल में ओपन करो निष्ठा। हमेशा दो टर्मिनल खोल के रखा करो, एक स्पार्क के लिए और एक लिनक्स के लिए। आपने क्या किया होगा निष्ठा, आपने ना फॉर्मेट चेंज नहीं किया होगा, आपने सिर्फ फाइल का एक्सटेंशन चेंज कर दिया होगा। आप अप एंड डाउन एरो यूज करो यहाँ पर एक बार, अगर वो सेशन में होगा तो आ जाएगा। नहीं आ रहा है क्या? सेशन में नहीं है कुछ भी? ठीक है, इमीडिएटली रीड दैट फाइल ना, 1 सेकेंड लगेगा। अच्छा, आपका तो सारा कंटेक्स्ट भी चला गया होगा, राइट? हाँ, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली रीड कर लो। इट विल टेक जस्ट 1 सेकेंड। sc डॉट टेक्स्ट फाइल एंड रीड इट। sc डॉट, हाँ, टेक्स्ट फाइल। ब्रैकेट के अंदर वो ही आपकी जो भी फाइल है, एयरलाइन डेटा है, क्या है? हाँ, एंटर। अब आपने इसका ना देखो, वेरिएबल तो बनाया ही नहीं, तो क्रिएट अ वेरिएबल ना, आरडीडी तो बनाओ पहले। हाँ, अब ए डॉट सेव एज टेक्स्ट फाइल, नहीं ना, सेव एज टेक्स्ट फाइल करना पड़ेगा ना। इसका नाम दे दो, मतलब ए बी सी डॉट सी एस वी वट एवर। अब दिस इज लाइक टू कन्वर्ट एन आरडीडी इनटू अ फाइल, व्हाट हैपेंड? ऊपर दिखाओ क्या इशू है। वो फाइल का नाम सही दिया है हमने? नहीं नहीं, नीचे नीचे स्क्रॉल करो। बस बस बस, एन एरर अकर्ड, बस वाइल कॉलिंग o28 डॉट सेव एज टेक्स्ट फाइल और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन ना। अरे वो df1 डॉट csv ऑलरेडी है ना मिस्टर, उसका नाम चेंज करो। अब देखो वहां पे, लिनक्स में देखो जाके, hdfs कमांड पे वो दिख रही है कि नहीं, यहां से बाहर मत निकलो। हाँ, तो this will show you the content of the directory.
but this time you have converted an RDD into a file, है ना, तो it's showing you the data. तो आपने उसमें क्या गलती की होगी निष्ठा, जेसन वाले में आपने फॉर्मेट चेंज नहीं किया होगा. मुझे कंट्रोल दे दो, मैं बता देता हूँ क्या है. अभी आप ही के पास कंट्रोल्स है निष्ठा. निष्ठा आपको कुछ इशू आ रहा है क्या प्रेजेंटर राइट देने में? शुड आई आस्क समवन एल्स? सर रिमोट कंट्रोल नहीं, मैं आपको शायद आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. नहीं, रिमोट कंट्रोल नहीं, वो आपको ऑप्शन नहीं आ रहा है मेक प्रेजेंटर का? हाँ मेक प्रेजेंटर आ रहा है. ओके हाँ, मेक मी प्रेजेंटर ना. थैंक यू. सो मैं ये कह रहा हूँ निष्ठा, व्हाट यू माइट हैव डन वाज, आपने क्या गलती की, आपने ये जो कमांड चलाया ना, ये सही चल गया. जब आपने ये भी चलाया ना, इसमें आपने क्या किया निष्ठा, आपने ये तो चेंज कर दिया df.json, लेकिन आपने ये चेंज नहीं किया होगा. इसलिए आपकी जो जेसन डायरेक्टरी है उसके अंदर भी CSV कंटेंट है. तो आपको फॉर्मेट भी चेंज करना होगा. एक बार ट्राई करना, वो हो जाएगा. तो आपको इस तरह से डेटा दिखेगा जैसे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है जेसन वाले फोल्डर में. ठीक है, वो माइनर सी आपने गलती की होगी. ओके, बट गाइस अब देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं शुरू से, कि जब भी आप whenever we are inside this shell, whenever we are inside the shell, that is known as interactive programming or interact, because you are interacting with the shell. वहीं पे इनपुट वहीं पे आउटपुट, इंटरेक्टिव प्रोग्रामिंग, इंटरेक्टिव एनालिटिक्स. बट रियल वर्ल्ड में ऐसा कम होता है. आप क्या करते हो, आप पूरा पूरा प्रोग्राम लिखते हो और वो प्रोग्राम को एज ए सिंगल यूनिट एग्जीक्यूट करते हो. दैट मीन्स जो भी लॉजिक होगा आपका, आप उसे एक .py फाइल में लिखेंगे. तो दैट्स व्हाट आई एम हियर टू शो यू. So guys, in real world, if you can see my screen, we actually create a full program. Once we create this full program, we have to run this program. तो मैं अभी आपको बताऊंगा पहले प्रोग्राम रन कैसे करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द प्रोग्राम. मान लो मैंने आपको बोला कि से जिशान, यू आर अ टीम मेंबर, मैंने एक पाई स्पार्क का कोड लिखा हुआ है .py फाइल में और आपको बोला इसको रन कर दो जिशान. तो मैंने जिशान को बोला कि भाई ये फाइल है जिशान, आपको इसको रन करना है. अब पाइथन की फाइल को रन करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप पाइथन स्पेस test.py करके भी रन कर सकते हो, लेकिन मैं ये बोलूंगा जिशान ये पाइथन फाइल
स्पेशल पाइथन फाइल है, मतलब ये एक स्पार्क की फाइल है, तो इसको ऐसे रन नहीं करना है। तो इसको कैसे रन करना है? इस फाइल को रन करने के लिए तो अब आप देखेंगे तो देयर इज अ कमांड गाइस नोन एज स्पार्क हाइफन सबमिट। कभी भी आपको जो डॉट पाई फाइल है, अगर उसमें स्पार्क का कोड लिखा हुआ है, तो आप उससे कैसे रन करेंगे? स्पार्क सबमिट एंड द प्रोग्राम फाइल। ओके, तो ये फाइल आपको कोई और दे सकता है। मैं इसको अभी अपने गिटहब पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी ले सकते हो। दिस फाइल शुड बी ऑन योर लोकल लिनक्स, ये हडूप पे नहीं होनी चाहिए, लोकल लिनक्स पे। तो आप स्पार्क सबमिट, ये मेन कमांड है जो क्या करती है, स्पार्क को सबमिट कर देगा आपका प्रोग्राम, तो आपका ये प्रोग्राम स्पार्क में चलेगा। तो लेट मी प्रेस एंटर एंड सी इट इज व्हाट हैपेंड। अच्छा, सिंटेक्स एरर आ गई इसके अंदर, तो मैं इसको ओपन करता हूं एक बार, देखते हैं इसमें क्या एरर है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कमांड 2 बार कॉपी हो गया है यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये प्रोग्राम 2 बार कॉपी हो गया ऊपर और नीचे, तो बस उसी को मुझे हटाना है। डन। So guys, what I am doing is Spark submit and then I am submitting this program. मैं आपको पिंग भी कर देता हूं, पहले आपको मैंने पिंग कर दिया है कमांड। And now see, it will run the Spark, it is running the Spark, and in the Spark it will be running the program, and it will run that job. It finished the collection, and this is the output, guys. So this is the output of the program. After giving me the output, it shut down the Spark context. It's shutting down the Spark context. It's stopping Spark, clearing the memory, memory store, block manager. It's stopping everything and clearing everything for me. Okay. So this is the output. But now let's see what was the program. This was the output. I'm pinging you the output. तो इसने पूरा प्रोग्राम चलाया, आउटपुट दिया और फिर सारे सिस्टम को बंद कर दिया। So let's see now the program. Test.py. So guys, if you look inside the program, the very first thing is I am creating a Spark context. If you go into the interactive shell, जब हम पाइथन के PySpark के शेल में जाते हैं, तो हमारे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बने बनाए मिलते हैं। हमें स्पार्क कॉन्टेक्स्ट, सीक्वल कॉन्टेक्स्ट और स्पार्क सेशन सब बने बनाए मिलते हैं, इसलिए हमने कभी भी इनको बनाया नहीं था। एससी वगैरह को हमने कभी बनाया नहीं था, एससी वेरिएबल को। बट यहां आप देखेंगे तो हम एससी वेरिएबल को बनाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू डू द पाइथन प्रोग्रामिंग, PySpark programming. You import the PySpark package. From that package, you call the Spark context. Okay. अब मैं 1.0 पे काम कर रहा हूं तो मैं Spark context बनाऊंगा। अगर मैं 2.0 पे काम कर रहा हूं तो मैं यहाँ Spark session बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको Spark context बता रहा हूं because you all are using 1.0. जब ये बन जाएगा उसके बाद हमारा काम वही होगा, sc.text file. You are reading this file which is in HDFS. Then what I am doing, I am saying okay text.count, इसके अंदर कितनी रोज है वो काउंट कर दो और उसका डेटा भी कलेक्ट करके दे दो मुझे। तो इट विल प्रिंट 2 things for me, the count of records and the actual data. So let's see what it printed for me. 1 second. तो मैं आपको ये प्रोग्राम प्रिंट कर रहा हूं दोबारा। सॉरी, मैंने प्रोग्राम फिर से आपको दिया। जस्ट रन दिस।
So guys, this is the program. You import PySpark package because it's Python. You will create the Spark context. Okay. And then you will do your programming as is. And then you will run this program using Spark submit command. So guys, please create that file and run it. आप लोग EMP की जगह आपकी जो भी फाइल है उसका नाम रख दो वहां पे. Please run it and let me know if it's running. तो देखो मैंने दो चीजें प्रिंट करवाई थी. काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स. So my job 0 gave me the count of records, and the another job 1 gave me the actual display of the data. So this was job 1, this was job 2, this was job 1, this was job 2. Guys, please let me know if you are able to run this. गुलजार, अभी कोई क्वेश्चन है? फाइल बनानी आती है आपको? लेट मी टेल यू गुलजार, कुछ नहीं करना है. नैनो, गिव द फाइल नेम, से test1.py, whatever. It will open this file. Copy paste that content which I have pinged you. If you cannot copy paste, you can write it. Or let me make it easy for you, Gulzar, 1 second. नितिका, VIDD से एग्जिट करना है तो आप पहले एस्केप प्रेस करो. मैं बता रहा हूँ, एस्केप प्रेस करो, उसके बाद शिफ्ट कॉलन, मतलब कॉलन आ जाएगा, एंड देन WQ, स्मॉल WQ, सेव एंड क्विट. वेरी गुड. तो गुलजार, मैं आपके लिए वो फाइल जो है गिटहब पे डाल देता हूँ, आप गिटहब से ले लीजिए. सो गुलजार, आप अपना ये ओपन करो, VMware में ही एक्सेसिबल हो जाएगा ये. इस लिंक पे जाओ, ये test.py.txt, ये इसको इग्नोर कर देना, .txt, इसको ओपन करो, ये कॉपी कर लो, यहां से कॉपी कर लोगे आप, राइट? गुलजार, लेट मी नो एक बार ये हो जाए तो.
Guys, all of you, please let me know, okay, once you are able to complete this activity. Nishtha, what's the error? I am giving you the control, Nishtha. Okay. So first of all, what are you trying to do? No, Nishtha, what are you doing? I'm not getting it. I told you to come out of the shell. Now you should not be inside the shell. You are copying and pasting that inside the shell. निष्ठा, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आप रियल वर्ल्ड में कभी भी शेल के अंदर काम नहीं करोगे. यू शुड कम आउट ऑफ द शेल. Yes. Now you should create a program. It's like you use PyCharm to create a Python file. So now you should open Nano, and inside that you should Nano paste that entire code which I आपको टाइप करना पड़ेगा क्या? हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा. आप गिटहब से ले लो ना, मैंने भी गिटहब लिंक दिया है गुलजार को. यो सर बट मैं इसमें गिटहब से भी कॉपी नहीं कर पाऊंगी. गिटहब से ओके. गिटहब ब्राउजर तो चल रहा होगा ना आपका इसमें? हाँ, वो लिंक पेस्ट करो मेरा गिटहब वाला. बिग डेटा. एडवांस स्पार्क. इसमें कोड. या सो स्क्रॉल डाउन. Yeah, this dash.py.txt. Yeah. Just copy paste the content from here. Yes. Yeah. Very good. Now Control X. Yeah, it will ask you for the file name, Nishtha. Give the file name like test.py. It's asking you for a file name. नीचे जो black line है. हाँ. File name दो यहाँ test.py. Enter. So ls करके देखो फाइल बनी. हाँ, बन गई. test.py फाइल बन गई. उसका कंटेंट देखो एक बार कैट करके. हाँ, स्पेस test.py. टैप टेस्ट कर दिया करो, खुद ही नाम आ जाता है पूरा. हाँ, एंटर. ठीक है, ये फाइल बन चुकी है. तो अब आप इसको रन कर सकते हो. स्पार्क में इसको रन करना है. डू इट. स्पार्क सबमिट. ना ये स्पार्क हाइफन सबमिट एक ही कमांड है वो. स्पार्क हाइफन सबमिट. इसका मतलब है आप स्पार्क में कोई प्रोग्राम चलाना चाहते हो. अब वेट, वो प्रोग्राम जावा का भी हो सकता है, स्काला का भी हो सकता है, पाइथन का भी हो सकता है. तो इट सिंपली लुक्स एट द फाइल एक्सटेंशन एंड रन इट. तो गिव test.py स्पेस test.py. बस इट विल सी कि ये पाइथन फाइल है. इट विल रन इट. So it's running your it's going inside the Spark shell, as in it's running the connecting to the Spark server, the master. It's creating the driver and workers. It's starting the executors, and it's also caching the data. It's running the RDDs or the data frames, whatever transformations actions are there, and then it will print you the output. Okay. So ये चल गया है, बट ऊपर स्क्रॉल करो, आपको एरर आई है. स्क्रॉल करो. मैं बताता हूँ एरर ये आई होगी कि तुमने EMP फाइल रीड की है, जबकि तुम्हारे पास एयरलाइन डेटा वाली फाइल थी.
scroll. Yes, wait. See, input part does not exist. EMP file, right? तो अब हम क्या करेंगे निष्ठा? Open that Python file nano में. नैनो नहीं ऐसे नहीं खोलते, उसको बंद करो. नैनो स्पेस फाइल का नाम test.py. यस, सो इंस्टेड ऑफ EMP आप अपनी फाइल का नाम देंगे ना वहां पे. नहीं, ऊपर था ना टेक्स्ट फाइल जो रीड हो रही है. नहीं, नीचे. हाँ, परफेक्ट. Guys, you are getting it. She did not have EMP file. She have airline data file, I think. Airline data. So she should give that airline data वाला जो फाइल का नाम था वो, because उसके HDFS में airline data वाली फाइल पड़ी है. तो she will create an RDD from that, and then she will show the count of records and the data. So she is running two actions: count and collect. Okay. Yeah, Nishta, come out of it. Control X. Y, press Y. Enter. डन. अब दोबारा से स्पार्क सबमिट चलाओ. नहीं, स्पार्क सबमिट के बाद फाइल का नाम भी तो दोगे ना. स्पार्क हाइफन सबमिट स्पेस जो भी आपकी प्रोग्राम फाइल है test.py, रन इट. अब ये क्या करेगा? ये आपकी पाइथन फाइल को स्पार्क के पास भेजेगा. स्पार्क इससे RDD बनाएगा और उसके ऊपर दो एक्शंस चलाएगा जो आपने काउंट और कलेक्ट के दो एक्शंस दिए हैं निष्ठा. Perfect. So Rahul, Tanya, Jishan, you guys are able to do it, right? Nishta, scroll करो ऊपर. Let's see ऊपर डेटा है कि नहीं. Scroll slowly. हाँ, कुछ फिर से एरर आया. ऊपर स्क्रॉल करो. इनपुट पार्ट डज नॉट एग्जिस्ट. आपने एयरलाइन डाटा है, एयरलाइन डेटा .csv फाइल थी ना निष्ठा? आपने .csv मिस कर दिया. सर तो वो एवरी टाइम .csv मेंशन करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली ना, वो तो पूरी फाइल आपकी है ना उस पाथ पे. एग्जैक्ट फाइल का नाम तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा ना, वरना हाउ विल इट रीड इट. मतलब abc is a different file, abc.csv is a different file, right? These are two different files. आपको एग्जैक्ट फाइल का नाम देना पड़ता है. हाँ, yes Tanya, yeah, you are right. So guys, I hope you understood the point. In real world, you get a program to run, and this is how you run a program. But you should know कि program के अंदर क्या लिखा हुआ है. ठीक है? Just wait for 1 minute and then I'll take the control. अभी स्क्रॉल करो निष्ठा. आई थिंक लेट्स सी कि डेटा आया कि नहीं. Yeah, you can see this data. So it's showing you the data. So now this was our purpose, as in to run a program from outside of the Spark shell. So you should know both the ways, how to work on a shell and how to work using the Spark submit command. Okay.
one thing to see here, which I did was while creating the Spark context, I passed in something as local. Let me change it one second. Okay. So what I did, let me tell you. So guys, what happens is whenever you create Spark context or Spark session, right? Whenever you create these things, so this parameter actually specifies the cluster manager. So yarn means I'm using yarn as the cluster manager. Mesos, that's one thing. But when I have written local here, right? Local. So local means it's a standalone Spark which I want to run without any yarn. So ideally you should not use local if you are running Spark on Hadoop. So अगर आपका Spark Hadoop पे चल रहा है तो आप yarn यूज करें, लेकिन अगर आप पर्सनल लैपटॉप पे चला रहे हो, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि हम पर्सनल लैपटॉप पे भी Spark कोड चला सकते हैं, तो हम यहाँ पे लोकल वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, सो दैट वाज द पॉइंट. So I was able to run it still, but this time it was yarn scheduler because I used yarn, but still I got the same output. There was somewhere the output. Yeah, here I got the output. Okay. So this was about it. Now the last thing for the day, we are going to see the machine learning, some points of machine learning. Before I go into machine learning, any questions, anyone? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर जैसे गिटहब का लिंक मैंने क्लाउडरा में खोला था, पहले इसको पेस्ट करने का ट्राई किया, फिर उसके बाद टाइप कर के देखा, और आपका जब कमांड जो मैंने चलाया है उसमें, हाँ सर वो तो उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, जो कमांड जो मैंने लगाया, आपने जो चैट में डाला था. नहीं गुलजार, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप यहाँ पे पहुंच चुके हो क्या? कोड तक आ गए थे आप? यहाँ पर आ गए हाँ थे सर, आप? कोड तक आ गया था. यहाँ पर आप आए, इसको खोलो, बस ये हाँ कंटेंट सर. कॉपी पेस्ट कर दो ना. ये कॉपी पेस्ट जो अभी निष्ठा ने जो किया है सारा स्टेप, वही तो करना है आपको. ये सारा कॉपी पेस्ट करना है, इसको अपनी नैनो सब कर दिया. कमांड के पेस्ट करना है, फिर आपकी बस सब नैनो की पेस्ट, फाइल बन जाएगी. सब पेस्ट तो कर दिया वो तो. और नैनो टेस्ट पाए तो पहले बना दी थी फाइल, उसके बाद ये कमांड पेस्ट किया. मैं आपको प्रेजेंटर राइट दे रहा हूँ फॉर 2 मिनट्स. वी हैव टू कंप्लीट दिस मशीन लर्निंग. हाँ, जल्दी से एक बार स्क्रीन शेयर करो. हाँ, ये बस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. अब आप कंट्रोल एक्स प्रेस करो, कंट्रोल एक्स, सर कंट्रोल एक्स. हाँ, वाई प्रेस करो, एंटर मारो. वाई वाई प्रेस करो, किया. एंटर.
वेरी गुड, आपकी फाइल बन गई। कैट करो, कैट कमांड से उसको देखो, कैट स्पेस फाइल का नाम। Very good. So you have a program where you are creating a Spark context, reading the EMP folder or file and showing me the content. So now run it through Spark submit command. Spark hyphen submit. Perfect. Space file का नाम. So you are submitting a program to Spark. Program is inside this Python file. Press enter. That's it, Gulzar. It is done. Yes, sir. Yeah. So now you have submitted your program to Spark. Program name is test.py. Within that, you are creating a Spark context to read a EMP file inside an RDD. And you are running some transformations and actions on top of it. But अब ये EMP नाम की फाइल होनी चाहिए. अगर EMP नाम की फाइल आपके HDFS में नहीं होगी तो एरर आ जाएगा. सर अभी क्रिएट नहीं हो पाई है. क्यों? हमने कल बात की थी कि आपको बनानी है, राइट? आपने नहीं बनाई? नहीं सर, मैंने ट्राई किया था फिर. कोई इशू नहीं है. आप आज बना लेना और कल मुझे एक बार रन करके दिखा देना. ठीक है सर. अच्छा, ठीक है, ये चल गया है. इसको ऊपर स्क्रॉल करो. हाँ, इसको स्क्रॉल कीजिए आप ऊपर. हाँ, चलते जाइए ऊपर 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 ऊपर. हाँ, सी सेम एरर निष्ठा को आई थी. वेट स्क्रॉल डाउन. सेम एरर निष्ठा को आई थी कि उसकी एयरलाइन डेटा डॉट CSV फाइल का नाम उसने सही नहीं दिया था. आप नीचे स्क्रॉल करो. बस 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 वेट. सी आपको भी वही एरर आ रहा है, इनपुट फाइल फॉर्मेट एरर. मतलब आपका भी पाथ डज नॉट एग्जिस्ट वाला ही प्रॉब्लम होगा. तो आप EMP की फाइल बनाएंगे तो हो जाएगा. ठीक है. ठीक है सर. ठीक है, आप मुझे स्क्रीन शेयर दे दो वापस. तो सर जो क्वेरी जो हम रन कर चुके हैं उसको सेव करने का क्या कमांड था? अभी आप मुझे राइट दे दो, स्क्रीन शेयरिंग राइट दे दो. दे रहा हूं. सारे कमांड्स मैंने गिटहब पे डाले हुए हैं, वहां से ले लेना अगर कोई डाउट हो तो. हाँ. So guys, what we have done so far is Spark core, which is about the RDDs, then Spark SQL, which is about the data frames. Okay. And now we are going to work on the machine learning library MLlib. Okay. And a very high level, not in detail. We are not going to look into graphics and Spark streaming, but as I told you, graphics is for graphical data processing. Okay. And Spark streaming is for real time data processing. Okay. आपका ये पूरा स्पार्क 2 घंटे का है. अगर आप उसमें देखेंगे, आपने जो मुझे पिंग किया था, तो 2 घंटे में all these things are not possible. But yeah, we are going into the MLlib now, which is most important for you guys. निष्ठा, हम महावत नहीं यूज करेंगे बिकॉज महावत जावा के लिए है.
Mahavat MapReduce चलाता है. Mahavat, you use Java and that's for MapReduce. So why we want to run something which is slow and complex, right? So we will skip MapReduce and go into Spark. Okay. So if you look at Spark, okay. So if you talk about Spark MLlib, so the benefit of Spark is you can use either Java, you can use Scala, Python, R, anything. You can use any three of these to run your machine learning. And Spark does not support pandas, but yeah, it supports NumPy and all. It started to support pandas with the project Koalas. Okay, so here is just showing how to run a k-means clustering and all, but let me run a basic program for you. Okay, before that, we just saw this thing, Spark submit, and then the name of the Python file. So we just executed this thing, Spark submit command. So I'm pinging you this link, which is for Spark machine learning. So guys, to start with, like when we talk about machine learning with Spark, there are two packages. One is MLlib, one is ML. So PySpark में पहले MLlib पैकेज होता था. MLlib पैकेज अभी पुराना हो गया है. रादर अभी नया पैकेज आ गया है जिसको हम कहते हैं ML. तो PySpark में दो पैकेजेस हैं, MLlib and ML. ML is the latest package. So like PySpark.ml, there is PySpark.mllib. इसके अंदर आप सब कुछ कर सकते हो, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, recommendation engine, anything. Okay, the benefit of doing this is these are faster. अगर आप खुद का एक पाइथन का प्रोग्राम लिखते हो तो वो आपकी सिंगल मशीन पे चलता है, लेकिन अगर आपको एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम क्लस्टर, Hadoop क्लस्टर पे चलाना है तो you need to use a distributed machine learning framework. So you see there is MLlib also, but MLlib is older and it supports limited models. Latest one is ML. आने वाले समय में this will be deprecated. Okay. So let's say what we have to do. We have to do regression. We want to implement regression. Deprecated means गुलजार वो चीज खत्म होने वाली है, आने वाले समय में उसका सपोर्ट बंद हो जाएगा. So you should avoid that. Okay. Sorry. Okay guys, so what you need to do, just open your PySpark shell, and now in the PySpark we are going to read a file, split it into train and test,
and then run the model. So let's say there is this train.csv file which I'm going to read. So first of all, I need to have that file. Okay, leave it. So even before that, from PySpark.ml.regression, you need to import the linear regression model. So we are using ML, not MLlib. So from PySpark.ml.regression, which regression model I want? I want linear regression. So all of you can open this in parallel, my GitHub account, and you can start to copy paste from here. So if you see, this ran successfully without any error. So guys, as we normally do, whenever we import a package, we create an object out of it, like linear regression. This is how we used to create an object, right? So let's give it a name, LR equals to this, where LR is a linear regression model. So within this, we have fit and we have predict. LR dot predict होगा नहीं तो there are some other functions. Predict नहीं होता इसके अंदर. So we fit the model and then we predict it. So LR dot, I think predict nahi hai, so there is something else. Predict. Okay, so what I'm telling you is, first of all, whenever you have to do machine learning, you need to know that there are certain machine learning packages available. So from PySpark.ml or MLlib, there is regression, we have linear regression. Then we will create an object for linear regression, okay? And from this object, we will do dot fit and dot predict, okay? So dot fit and dot predict, these are the two things we will do. But dot predict की जगह इसमें कोई और function होता होगा, dot transform or something, which I will tell you, or dot validate. But before we go ahead, please let me know if you are able to do this much. Is this is working fine for all of you? I think this will not work because yes, this will not work because I told you, right, this is latest. You have to use that MLlib because you are using Spark 1.0. I am using 2.0. तो मेरे वाले केस में ये चल जाएगा, आपके केस में ये नहीं चलेगा. So you just change this to MLlib. Import error, cannot import linear regression from MLlib regression. So let me check this. Go back to the link which I shared with you, okay? So here you have regression. आपको ये यूज करना है guys, as I am telling you. MLlib is 1.0 के साथ है, आप लोग ये यूज करेंगे. Come here. Yeah. So let me tell you which is the function name.
So here you have linear regression with SGD. Can anyone tell me what is SGD? Guys, ping me what is SGD. So here instead of linear regression, you have linear regression with SGD. See, that worked. Perfect, Nishtha. Yes, Aditi. Stochastic gradient descent. तो जब मैंने आपको मशीन लर्निंग पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू ग्रेडियंट डिसेंट आर ऑफ 3 काइंड. एनीवन रिमेंबर? ग्रेडियंट डिसेंट 3 तरह का होता है. बैच ग्रेडियंट डिसेंट, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट and stochastic gradient descent. Stochastic gradient descent is fastest, but it may not converge to the global minima. Yes, guys, good that you remember. So please see if this is working. Let me know if this is working. तो यही है, आपको बस ध्यान रखना है कि आप किस वर्जन पे काम कर रहे हैं. See, you have ridge regression, you have lasso regression, everything is here. So there are these functions like dot train, dot predict. These are all available. Okay. You must have seen this sc dot parallelize, collect. Even if you guys are having real-time data and you want to do machine learning on real-time data, so we have streaming linear regression with SGD. Sir, Yes, yeah, Nishta. sir, still I'm getting error. No module named NumPy. NumPy तो यूज ही नहीं किया इसमें. नहीं ऐसा नहीं होता ना निष्ठा. सी व्हाट हैपेंस इज, जब आप कोई पैकेज इंपोर्ट करते हो तो वो पैकेज इंटरनली किसी पैकेज दूसरे पैकेज को कॉल करता है, तो दैट्स व्हाई वी मे गेट दिस एरर. तो एक बार चेक करना इंपोर्ट नमपी चल रहा है क्या. No. हाँ, तो आपको नमपी पैकेज को पिप इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले. सो सर लोकल में या पाइस्पार्क में? हाँ, try to do pip install numpy and just see if it works. It will not work. So what you have to do, exit it, come out of it, exit, come out of it, go inside the Python. Just see if you go inside Python, and there try to import numpy. Just see कि आपके Python में numpy है कि नहीं. Go inside Python, guys. Those who are getting the error, see यहाँ पर numpy है क्या? यहाँ पर नहीं है, इसीलिए वहां पर नहीं है. अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पिप इंस्टॉल numpy करेंगे. अब यही प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर चल नहीं रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पर आपको पिप इंस्टॉल चलाना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल numpy. देखो समझो स्लोली. हाँ, पहले आप गए स्पार्क के अंदर, वहां आपको numpy एरर आया, तो आप पाइथन में जाएंगे, वहां पर चेक करेंगे कि वहां पर numpy है कि नहीं. वहां पर नहीं है तो ये कमांड चलाएंगे. अगर वहां नहीं चल रही है, pip command not found. हाँ, आई एम कमिंग टू दैट. तो फिर आप फाइनली जो पिप इंस्टॉल करते हो, सर आई गेस इट विल वर्क विदाउट एक्सक्लेमेशन मार्क, तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल चलाते हो. ठीक है. अब मेरे में रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, बट लेट मी से पिप इंस्टॉल केरास. अब जैसे सी इट्स इंस्टॉलिंग अ पैकेज केरास फॉर मी. अब डिपेंड करता है गाइस कि आपके केस में पिप चल रहा है या नहीं चल रहा. ओके नो आदित्य, वो बाहर से ही चलाना पड़ेगा. हाँ, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ गाइस, देखो मेरे केस में पिप चल रहा है,
आपके केस में नहीं चल रहा। इसका सीधा सीधा रीजन क्या है, आई टेल यू। कि जो पिप के बाइनरीज होते हैं, मतलब पिप डॉट ई फाइल जो होगी, आपको वो लोकेट करनी पड़ेगी कि आखिर वो कहाँ है। इससे मेरा मतलब क्या है, लेट मी शो यू दिस। मेरे पास पाइथन इंस्टॉल्ड है मेरे लोकल मशीन पे। गाइज इसको समझो ढंग से। मेरे लोकल मशीन में पाइथन है, आई गो इनसाइड दैट। उसके अंदर आई गो इनसाइड लाइब्रेरीज। आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर पिप। आई एम सर्चिंग फॉर पिप कमांड, ओके। यू कैन सी पिप कमांड हेयर गाइज। देखो इसका मतलब क्या है, जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ हमें एक pip.exe फाइल मिलती है, ठीक है। और ये pip.exe फाइल जो होती है, जिस पाथ पे ये फाइल पड़ी है वहीं पे जाके हमें पिप कमांड चलानी पड़ती है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेट करना पड़ेगा पिप, लोकेट पिप। अब ये इतना ज्यादा कुछ आउटपुट दे देता है, ये बड़ी गड़बड़ है। अरे आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ निष्ठा। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों के पास जो लोकल मशीन है उस पे पाइथन इंस्टॉल्ड होगा, या चलो एनाकोंडा भी इंस्टॉल्ड होगा, जो भी होगा, उसके साथ आपको कहीं ना कहीं पे पिप इंस्टॉल्ड मिलता है, ठीक है। चलो मैं एनाकोंडा में चला जाता हूँ। अब एनाकोंडा है कहाँ, ढूंढना पड़ेगा। जहां पे भी आपका एनाकोंडा भी इंस्टॉल्ड होगा निष्ठा, आई एम सेइंग कि उसमें भी कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको एक सॉरी पिप जो फाइल होती है वो कहीं ना कहीं पड़ी होगी, पिप फाइल। तो अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि आपके हडूप में भी अगर पाइथन के अंदर आप जा पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एबल टू गो इनसाइड पाइथन, दैट मीन्स कि पाइथन है तो पिप भी होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट साइट बहुत सारे तरीके हैं उसको ढूंढने के। साइट डॉट गेट साइट पैकेजेस, आई एम जस्ट ट्राइंग वन ऑफ देम। So I have this site packages folder that gives me the path of my Python. So I'm coming out of this. Ultimately मुझे pip ढूंढना है कहां पर है, वहां से pip चलाना है मुझे, ओके। तो मतलब व्हाट आई एम सेइंग निष्ठा, ये आप लोगों को खुद से थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। वी हैव टू सर्च किया आखिर वो पिप फाइल पड़ी कहां पर है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सर्च फॉर इट। जैसे नमपाई मेरे केस में यहाँ पे मुझे मिल गया, आपके केस में नमपाई यहाँ पर नहीं है, तो उसके भी बहुत तरीके हैं। आप डब्ल्यू गेट कर सकते हो, पिप की साइट से डब्ल्यू गेट कर सकते हो, ये नमपाई पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट, वेट। locate, guys, run this command, okay, just copy paste this command, locate pip and then pass it to more. So let me search. ये रहा गाइज, मिल गया। यूजर बिन में पिप है मेरा। तो निष्ठा, आई एम गिविंग यू द स्क्रीन शेयरिंग राइट, दिस विल हेल्प एवरीवन टू सर्च इट। तो गाइज पिप कमांड अगर डायरेक्टली ना चले कभी, तो उसका मतलब है आपको वो ढूंढनी पड़ेगी कहां पर है और वहीं से ही चलानी पड़ेगी, ठीक है निष्ठा, डू दिस। हाँ, ये क्या चलाया आपने, इसको, इससे बाहर निकलो। क्यू, प्रेस क्यू। हाँ, दोबारा से अब चलाओ पिप, सॉरी लोकेट। वी आर गोइंग टू लोकेट स्पेस पिप स्पेस वही पाइप ऑपरेटर के बाद मोर। वेरी गुड। नाउ वी हैव टू सी कि आपके केस में पिप, हाँ देखो मिल गया।
नीचे से 10th लाइन देखो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, दिस वन दिस वन। इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना निष्ठा, इसके ऊपर भी कहीं है क्या, एक बार देखना, बिकॉज ये ह्यू के साथ मिल रहा है मुझे, वैसे मुझे चाहिए डायरेक्टली, डायरेक्टली मेरे पास पिप नहीं है। ठीक है चलो कोई नहीं, और नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। एक बात तो मुझे मिल ही गया, बट ठीक है निष्ठा, डू वन थिंग, कॉपी दैट पाथ, यूजर लिब ह्यू बिल्ड एनवायरमेंट पिप बिन, हाँ इसको कॉपी कर लो, परफेक्ट। अब क्यू प्रेस करके बाहर निकलो, नहीं 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 वो कॉपी हो गया, क्यू प्रेस करो बाहर निकलो, अब पेस्ट मारो इसको, परफेक्ट, स्पेस इंस्टॉल numpy, enter, perfect. So what this did, Nishta, I hope everyone, Aditi, you also got it right, कि देखो pip कमांड तो थी लेकिन वो डायरेक्टली रन नहीं हो रही थी, तो ये जो एरर है उसको हम बाद में देख लेंगे निष्ठा। तो हमने उसके बाइनरी तक गए और वहां से उसकी इंस्टॉल कमांड चला दी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इशू क्या है। Downloading this file this, complete output from command this, trace back this, python setup.py की egg info failed with the error code this, build with the numpy this, okay, again run that command निष्ठा, अप एरो करो, अप एरो, हाँ शुरू में sudo लिख दो, स्टार्टिंग में sudo, sudo, इसका मतलब क्या होता है गाइज, sudo नहीं नहीं sudo, sudo, इसका मतलब होता है कि हम ये जो कमांड चला रहे हैं, स्पेस स्पेस, वो हम एडमिन राइट से, नहीं नहीं स्पेस स्पेस स्पेस, वो हम एडमिन राइट से चला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है निष्ठा वो एडमिन की वजह से आपको कुछ एरर आया, एंटर। सूडो का मतलब होता है हम ये एडमिन प्रिविलेज से कमांड चलाएंगे जो पिप इंस्टॉल चलेगी। ठीक है नो प्रॉब्लम, मतलब ये जो इशू है ये कुछ और ही है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द पिप थिंग। ठीक है वो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, एक बार वेट वेट वेट, देयर इज पिप 2.6 निष्ठा, यही सेम कमांड चलाओ लेकिन पिप के बाद 2.6 लिख दो। पिप के अलग अलग वर्जन होते हैं हमारे पास, आपके पास नहीं नहीं वो एक ही वर्ड है, वो 2.6 एक ही वर्ड है, पिप 2.6 एक ही वर्ड है, हाँ एंटर। देखो आपकी numpy.zip फाइल तो इंस्टॉल हो गई है निष्ठा, बट वो अनपैक नहीं हो पा रही है। पाइथन की setup.py egg info failed with error code 1 in this, एक बार देखना ये फाइल में क्या लिखा है, टेम्प पिप बिल्ड वाली फाइल का कुछ रीड करना, कैट करना इसको। ओके नहीं नहीं वो टेम्प फाइल है ना, उड़ गई होगी वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है निष्ठा, ओके ये जिप फाइल जिस पाथ पे है देखना, उस नहीं 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 जा पाओगे आप उस पाथ पे, वो HTTPS का पाथ है, लीव इट। सो निष्ठा आई होप यू गॉट द प्रोसेस कि करना क्या है, बट द प्रॉब्लम इज ये वर्चुअल मशीन में सेटिंग के प्रॉब्लम्स है, एटमेक्स हम पिप इंस्टॉल करके वहां तक पहुंच सकते हैं। आप ऐसा करो निष्ठा, वो लोकेट वाली कमांड दोबारा चलाओ, ये ह्यू पे हमें शायद एक्सेस नहीं है, हम ह्यू के थ्रू चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके आप फिर से लोकेट करो, हम किसी दूसरे पिप कमांड के थ्रू ये काम करेंगे, वेरी गुड, डू इट, एंटर। हाँ अभी देखते हैं, वेट, ह्यू वाले सारे इग्नोर करो, एंटर मारो, नीचे चलो, एंटर मारते रहो, लेट्स सर्च की और कोई हमारे पास है क्या ह्यू के अलावा, जस्ट कीप प्रेसिंग एंटर, लेट्स
keep it pressed. Wait, keep it pressed. Okay. Nista, do one thing. 1 second. Q, press Q and come out of it. CD space forward slash. एक ही user USR go inside USR. फिर से एक और slash and bin. Enter. ls press ls. Enter. यहाँ पर देखो, यहाँ पे है क्या? No, do one thing. ls space pip. Just do ls space pip. It's not there. ठीक है, मतलब do one thing. Okay, let me tell you. Sudo space yum space install space python 3.5. Enter. Wait. sudo yum install python 3.5 को 35 कर दो. 3.5 में 35 करो इसे एक बार. So what I'm trying to do, I'm trying to install latest version of Python. Yum repo, all mirror URLs are not using FTP, HTTPS or file. Invalid release repo or combination, removing mirror list with no mirror. This error cannot find a valid base URL for repo base. निष्ठा, आप इसको थोड़ा गूगल कर लेना, because these are all setup related things. So you can try to get numpy. If you're not getting it, try to get Python, latest version of Python. Okay. So these are all system related things. So you can give back the access to me. Otherwise हम इसको VM को सही करने में पूरा टाइम चला जाएगा. So guys, we will continue tomorrow from here. It's already too late. But what we are going to do tomorrow, I'm going to show you these programs on my local machine if it does not run on yours. Oh, sir. Yes, Nishta. So maybe I can download the Python separately because मैंने सिर्फ Anaconda download किया था. So maybe उसमें उससे कुछ error आ रहा हो. नहीं, तो आप तो वर्चुअल मशीन पे हो ना, आपके लोकल से उसका कोई लिंक ही नहीं है. प्रॉब्लम इज वर्चुअल मशीन में पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं है ना. So what to do for that? हाँ, मतलब you may not be able to run the PySpark from your virtual machines, so you have to follow what I will be teaching here tomorrow, or you may need the access to cloud, or else you can try to fix that numpy wala thing if possible. Just Google it, जो errors आ रहे हैं, try to fix it. Okay. जो हमने pip install करने की कोशिश की थी, if you can try to resolve that. Okay. Yes. So we are just going to put half an hour tomorrow in this, and then after that we will take the project on the Spark, which will be done using Spark SQL, which is like RDDs and data frames. Okay, so we will take that project tomorrow. Okay guys, anyone, any question? So I told you there are two libraries, MLlib, which is older, and then ML, which is newer.
Anyone, any question? एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुलजार बोलो। सर मैं नोट करके रख लेता हूँ, एक बार आप क्वेरी सेव करने का कमांड एक बार बता दो, फिर मैं लिख के रख लूंगा अभी। क्वेरी सेव करने का कोई कमांड नहीं होता गुलजार, क्लाउडरा में कहीं पे भी नहीं होता। The only thing that you can do, at max what you can do is there is a history command. History. This history command tells you the history of Linux commands. तो आपको लिनक्स की कमांड्स ही दिखेंगी, इसमें स्पार्क की कमांड्स नहीं दिखेंगी। तो हिस्ट्री आप चला सकते हो और आप लिनक्स की हिस्ट्री देख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है सर। तो जो क्वेरी जो हमने क्लाउडरा में चलाई है, अगर वो बाद में हमने वहां से आगे का रिज्यूम करना हो तो उसके लिए नहीं, तो इसीलिए आप उसको सेव करके रखो ना पहले नैनो में, और ठीक है नैनो के सर। थ्रू सारा काम करो। इसीलिए हम नैनो एडिटर यूज करते हैं ना अपनी कोडिंग के लिए। या फिर आप सब कुछ नोटपैड में लिख के रखो, वहां से कॉपी पेस्ट करो। ठीक सर है, वो कमांड एक बार चैट में डाल दोगे, वो जो सेव कमांड अभी जो आपने हिस्ट्री। हिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है सर। तो टुमारो वी विल डू वन मशीन लर्निंग मॉडल, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, or classification, any one model on MLlib. Okay, so guys, please read more about it. Tomorrow we will be done with our Spark course along with the project. So practice more and ask me questions tomorrow. Okay, Damini or Alok, you can close this session. Thanks everyone for your time.